Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। आप लोग दोहरा सकते हैं। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram प्रभु Ram, Hare Hare. Hare हरे Krishna, कृष्णा। प्रभु राघव प्रभु ने मैसेज के चैंटिंग करनी है। Ram, Hare Hare. Yes, प्रभु हो गए रेडी. यस प्रभु, नाउ प्रेयर्स कुड बी चैंटेड। ओके। जय श्री राम संकीर्तन यज्ञ की जय। गोपाल की जय। दर्शकों को इतना अच्छा कीर्तन कर रहे थे, लग रहा था कोई क्लास कीर्तन कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा। एकदम डिवोशनल, वेरी नाइस। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमां विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। सो केशव के प्रभु ने आदेश दिया है माधवेंद्रपुरी और चंदन यात्रा के ऊपर कुछ बोलने, तो उस पर चर्चा करेंगे आज। हरे कृष्णा। हो सके तो उसे डिवोटी आपका वीडियो भी ऑन कर लेंगे, तब व्यक्तिगत रूप से सबको देख पाएंगे तो अच्छा रहेगा। तो ये जो कथा है माधवेंद्रपुरी की, ये परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज को बहुत ही प्रिय थी, बहुत ही ज्यादा प्रिय। महाराज बहुत सारे लेक्चर्स में माधवेंद्रपुरी और कैसे वो अथक प्रयास करके चंदन लेके आते हैं भगवान के लिए, उसके ऊपर बहुत बढ़िया बताते हैं। हाँ, हाँ, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज, उनको ही स्मरण करते हुए, उनको ही एक क्लास डेडिकेट करते हुए हम उनसे आशीर्वाद याचना करके आज कुछ माधवेंद्रपुरी की कथा के ऊपर कुछ बात करेंगे। तो ये जो माधवेंद्रपुरी हैं, ये बहुत ही स्पेशल व्यक्ति है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये आध्यात्मिक जगत में कल्प तरु कल्प वृक्ष हैं, और ये ऐसा साधारण कल्प वृक्ष नहीं है, बहुत ही विशेष है। मतलब ये भगवान के बहुत ही नित्य पार्षद है, खाटू चातन महाप्रभु के बहुत ही नित्य पार्षद है। तो माधवेंद्रपुरी पाद ये भौतिक जगत में आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं भगवान जब अवतार लेते हैं, जब भगवान आते हैं स्वयं, तो बहुत सारे अपने निजी पार्षदों को भेजते हैं पहले पृथ्वी पर ना। तो उनमें से ही माधवेंद्रपुरी एक बहुत ही निजी पार्षद है भगवान के। और बताते हैं कि जो हमारी ब्रह्म माधवा गौड़ी संप्रदाय, पता है हम सब ब्रह्म माधवा गौड़ी संप्रदाय में आते हैं, मतलब मध्वाचार्य है ना, हमारे बहुत एक प्रोमिनेंट आचार्य हैं। तो माधवाचार्य के लाइन में आप देखेंगे कि माधवेंद्रपुरी से पहले तक, मतलब लक्ष्मी तीर्थ, सॉरी लक्ष्मीपति जो आचार्य हैं, तो माधवेंद्रपुरी जो है उनके गुरु लक्ष्मीपति हैं। तो लक्ष्मीपति तक, मतलब मध्वाचार्य की लाइन में लक्ष्मीपति तक आप देखेंगे कि जो हमारा सिद्धांत है वो भक्ति का, उसमें ये जो माधुर्य भक्ति, मतलब कैसे जो आ, जो वृंदावन के व्रज वधु वगैरह हैं, जो कैसे माधुर्य भाव में भगवान की सेवा होती है, तो वो जो माधुर्य भक्ति का जो सीख है, वो माधवेंद्रपुरी ने इसका पिटारा खोला है। वो एक्चुअली वहां पे इंट्रोड्यूस करता है, और चैतन्य महाप्रभु फिर उसको और आगे लेके जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु उन्होंने ही इन्होंने से उन्हों उनसे ही लिया है, इनसे माधवेंद्रपुरी से ही लिया है। ये जो माधुर्य प्रेम का जो रहस्य है, वो माधवेंद्रपुरी से लिया है। तो माधवेंद्रपुरी जो है, वो उनको बोलेंगे हम, इज लाइक अ सीड ऑफ डिवोशनल ट्री। तो जो बीज है वो ये भक्ति के, जो भक्ति का जो पूरा वृक्ष आएगा, जो चैतन्य महाप्रभु को बोला गया ट्रंक है उसके, और उसकी शाखाएं के लिए दो मुख्य शाखा बोली गई है, अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, दो दो मुख्य शाखा है, जिनसे कि पूरा भक्ति का वृक्ष डेवलप होता है। और इस्कॉन भी एक प्रकार की शाखा ही है उस भक्ति के वृक्ष में। तो उसके जो रूट हैं, उसके जो जड़ हैं, वो है माधवेंद्रपुरी, और उसके जो ट्रंक है, जो तना है, वो है चैतन्य महाप्रभु। और उसका जो स्प्राउटिंग है, आप कह सकते हैं स्प्राउटिंग, मतलब जैसे ही जब बीज से जब थोड़ा स्प्राउट निकलता है, अंकुरित होता है, तो वो ईश्वरपुरी कह सकते हैं आप, वो ईश्वरपुरी है। और फिर जो ट्रंक है, फिर वो चैतन्य महाप्रभु, वो पता है माधवेंद्रपुरी के शिष्य कौन है, ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के शिष्य लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। इस प्रकार से, तो इस प्रकार से दिया गया है। तो माधवेंद्रपुरी का स्थान बहुत ही विशेष है, कोई असाधारण की बात नहीं है, ये भगवान के निज पार्षद है। तो माधवेंद्रपुरी की एक बहुत विशेष कथा आती है चैतन्य चैतन्यता के इस मध्य लीला के 4वें अध्याय में। उनकी जो शुद्ध भक्ति को बहुत बढ़िया से यहाँ पे बताया गया है। तो ये जो कथा है, इसमें एक सबसे बहुत ही विशेष बात है कि यहाँ पर भगवान जो है स्वयं भागवतपुरी से आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान 3 बार स्वप्न में आते हैं भागवतपुरी का, इस पूरे अध्याय में हम देखेंगे 3 बार स्वप्न में आते हैं। तो पहले इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ये जो है ये
जब जगन्नाथपुरी की ओर जा रहे थे तो फिर वो रमुना में रुकते हैं। और जब रमुना में रुकते हैं तो वहां पर गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। वहाँ गोपीनाथ जी हैं, और वो गोपीनाथ का जो मंदिर था वो रमुना में जो है। तो मतलब जब चैतन्य महाप्रभु ने सुना था अपने गुरु ईश्वरपुरी से पूरी कथा कि क्या हुआ है यहाँ पर, किस प्रकार से गोपीनाथ जी ने महाजनपुरी के साथ आदान प्रदान किया है, तो ये चैतन्य महाप्रभु को पता था ये बहुत अच्छे तरीके से। तो चैतन्य महाप्रभु उसको स्मरण करके बहुत एक्सटेसी में थे कि कैसे यहाँ पर ये जो खीर चोर गोपीनाथ इनका नाम पड़ा हुआ है, तो ये खीर चोर गोपीनाथ का रहस्य उनको पता था। तो बहुत ही वो एक्सटेसी में चैतन्य महाप्रभु वहाँ पर नृत्य वगैरह कर रहे थे, और पूरा वो भगवान के प्रेम में बिल्कुल मग्न थे, और माधवेंद्रपुरी को याद कर रहे थे उस समय, क्योंकि खीर खीर चोर गोपीनाथ थे ना, उन्होंने खीर चुराया था माधवेंद्रपुरी के लिए। तो हाँ, यहाँ पर बताते हैं कि अम, या तो चैतन्य महाप्रभु, ये देख सकते हैं यहाँ पर, डिटी ऑफ गोपीनाथ टेम्पल एट रमना वाज वेरी अट्रैक्टिव, लॉर्ड चैतन्य विजिटेड टेम्पल एंड ऑफर्ड हिज ओबेसेंस विद ग्रेट डिवोशन। भगवान को प्रणाम करते हैं, और फिर चैतन्य महाप्रभु जो है ऐसे जब प्रणाम कर रहे होते हैं तो भगवान गोपीनाथ के हेलमेट से फ्लावर गिरता है, अ, फूल पुष्प गिरता है। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और फिर वो अपने भक्तों के साथ नृत्य करने लगते हैं। और सभी भक्त लोग एकदम आकस्मिक हो जाते हैं, एकदम चकित होते हैं कैसे कि चैतन्य महाप्रभु इतना प्रेम विभोर हुए हैं। हाँ, और उनके ही दिव्य गुणों और सुंदरता को देख के भी सभी सभी भक्त एकदम चकित रहते हैं आध्यात्मिक रूप से। तो सो फिर भगवान की अलग अलग प्रकार से सेवा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की सभी लोग। और भगवान वहाँ पे वहीं पे रुकते हैं, उसी मंदिर में रुकते हैं, गोपीनाथ जी के मंदिर में रुकते हैं। और फिर वहां पर वो जो स्वीट राइस है वहाँ का, जो उसको बोलते हैं अमृत केली, जो कि बहुत ही विशेष खीर है। कोई खाए क्या? आप में से कोई जन खाए हैं अमृत केली? जो राधा गोपीनाथ नहीं, गोपीनाथ गोपीनाथ मंदिर यमुना में, वहाँ कोई जाके खीर खाए? आप में से कोई जन? कोई नहीं? ओके, ठीक है। तो बहुत महत्वपूर्ण होगा अगर आप ले पाएंगे। केशव के प्रभु को बोलिए आपको आपके लिए लेके आएंगे, जो मायापुर यात्रा जाएंगे तो। केशव के प्रभु हैं क्या? केशव के प्रभु को बोलना पड़ेगा, वो आपके लिए लेके आएंगे। रमणा से लेके आना पड़ेगा आपके लिए। तो इसी साल आप लोग, ये आपका होमवर्क है, इसी साल आपको अमृत केली खानी है। केशव गोपीनाथ से अमृत केली ला करके खाना, ये आपकी सेवा है इसी साल। ठीक है, दिसंबर के पहले तक का टाइम है, जैसा भी करके आप ले लो। कोई भी जगन्नाथपुरी जा रहा है, कोई भी रमना जा रहा है तो आप सबका पता कर लो। और बहुत सारे वक्त जाएंगे वैसे, जब मायापुर यात्रा है तो वहाँ पे उस टाइम पे जगन्नाथपुर भी जाएंगे बहुत सारे वक्त। रमना पहले ही पड़ता है थोड़ा, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं, या कोई वक्त वैसे भी जा रहे होंगे तो वहाँ से मंगाइए। तो ये सभी को अमृत केली का आस्वादन करना है। ठीक है। तो तो फिर अभी क्या होता है, चैतन्य महाप्रभु जो है, ये कहानी जो है कि कैसे इसका जो गोपीनाथ है उनका नाम कैसे खीरचोर गोपीनाथ पड़ा है, तो वो आप बताते हैं। और ये नित्यानंद प्रभु और बाकी अन्य भक्तों को ये बताते हैं कि कैसे इसका नाम खीरचोर गोपीनाथ पड़ा है। तो फिर ये कहानी चालू करते हैं कि कैसे बालवनपुरी जो है एक बार ऐसे जब यात्रा कर रहे थे, तो वृंदावन जाते हैं, वहां पर गोवर्धन पर्वत पर वो गोवर्धन के पास पहुंचते हैं। और फिर एक्चुअली माधवेंद्रपुरी इतना प्रेम विभोर रहते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता दिन रात का क्या जगह है, क्या स्थान है, पता ही नहीं चलता। कभी बादल को देखते थे तो वो बादल को देख के ही उनको ऐसा अकस्मात कृष्ण का इतना चिंतन होता था, क्योंकि बादल का जो रंग होता है वो कृष्ण के वर्ण से मिलता जुलता है ना, स्काई ब्लू। तो तो वो रंग जो घनश्याम जो कलर है, तो वो देखते ही बिल्कुल भगवान के स्मरण में हो जाते थे, और फिर वो उधर ही भाव विभोर होकर के नाचे गाने लगते थे, लोटपोट हो जाते थे, अचेतन हो जाते थे। इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी थे, मतलब इतना उनका प्रेम का पराकाष्ठा वो प्राप्त किए हुए थे इस प्रकार से। तो ऐसे वो जा रहे थे, फिर वो गोवर्धन को जा पहुंचे, और वहां पर
गोवर्धन के पर्वत को उन्होंने परिक्रमा किया, और फिर गोविंद कुंड जाते हैं, वहां पर वो स्नान करते हैं, फिर वहां बैठते हैं एक वृक्ष के नीचे। और फिर एक बहुत अच्छी घटना होती है, एकदम फर्स्ट क्लास। ये अभी यहाँ पे जो आप देखेंगे क्या होता है कि वहां पर एक ग्वाल ले आते हैं, एक ग्वाल बाल आता है, एक बालक आता है, बहुत सुंदर बालक, बहुत ही आकर्षक बालक। वो क्या आता है, एक दूध का पॉट लेके आता है, घड़ा, मतलब पॉट ऑफ मिल्क, जो घड़ा है दूध का, छोटा सा बर्तन में लेके आता है। और बहुत ही मुस्कुराते हुए वो फिर माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि माधवेंद्रपुरी, देखिए मैंने आपके लिए दूध लाए हैं, तो आप कुछ तो मांगते नहीं हो किसी से। हाँ, और आप किस, और कुछ तो आप चिंतन करते रहते हो, ध्यान करते रहते हो। तो इस तरह से वो जब सुंदर रूप देखते हैं माधवेंद्रपुरी इस बालक का, तो बहुत संतुष्ट रहते हैं ये देखकर। अरे इतना सुंदर बालक है, इतना मधुर बात, मधुरता से बोल रहा है, दूध लेके आया है। तो बहुत ही ऐसा उनको इतना, उसका हृदय इतना तृप्त हो जाता है कि उनकी सारी भूख प्यास सब भूल जाते हैं माधव, इतना उस बालक का इस तरह से उसको देख करके, उसका दर्शन करके, उसको सुन करके पूरा भूख प्यास मिट जाता है। तो माधवपुरी पूछता है, अरे आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हो, और आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर फास्टिंग कर रहा हूँ अभी। तो फिर वो बोलते हैं, लड़के बोलते हैं कि अरे मैं तो ग्वाला हूँ, मैं तो इधर ही गाँव में रहता हूँ, और मेरे गाँव में तो कोई भी फास्ट नहीं करता है, आप क्यों फास्ट कर रहे हो। तो फिर बोलते हैं कि हमारे गांव में तो लोग अब जो है मधुकरी लेकर के खाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो केवल दूध ही लेते हैं, लेकिन अगर कोई जो है कुछ मांगता ही नहीं है, तो फिर मैं उसको जा करके देता हूँ, तो मैं जा करके उसको सब प्रदान करता हूँ, आप तो कुछ मांगते नहीं, तो इसलिए मैं आके आ गया। इस तरह से बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि वहां कुछ स्त्रियां आई थी, उन्होंने देखा आपको, जब वो पानी लेके आई थी तो आपको देखा, और फिर उन्होंने मेरे को ये दूध दिया और आपको देने के लिए बोला, तो मैं लेके आ गया। फिर बोलते हैं कि अभी मेरे को तुरंत जाना पड़ेगा, मेरे को गाय वगैरह धोना है, तो मैं इसको बाद में ले लूंगा, हाँ पॉट को आप आराम से पी लो, मैं जाता हूँ। अब वो चले जाते हैं वहां से, ओझल हो जाते हैं खट से। तो इस तरह से वो यहाँ निकल जाते हैं। फिर माधवेंद्रपुरी का जो हृदय है बिल्कुल चकित हो जाते हैं, अरे ये कैसा, क्या घटना हुई है, कोई बालक आया इतना सुंदर आकर्षक, और ये मेरे को दूध देके गया ना, ऐसा सोच ही रहे थे वो, ऐसा रिफ्लेक्ट कर रहे थे उस चीज में, कैसे हुआ क्या इतना, मतलब समझ रहे हैं कोई बात, एकदम प्लीजिंग समथिंग हैपेंड समझो, है ना। आपके गुरु महाराज प्रभुपाद प्रभुपाद, आई मीन गुरु महाराज आपके पास आके आपको आगे आलिंगन किया, और कुछ आपको अचानक से कुछ ना महाप्रसाद दे दिया, या कुछ महा दे दिया आपका अपना, और आपको एकदम एकदम अचानक से ऐसा हो गया ना, ऐसा हम तो सब प्लीजिंग घटना ऐसे होगी। तो आप कैसा रिफ्लेक्ट करोगे, अरे हुआ क्या, ऐसे कैसे आगे गुरु महाराज अचानक से मेरे को आलिंगन दे दिया, मेरे को महाप्रसाद दे दिया, और गार्लैंड दे दिया, ऐसे कैसे कर दिया, सब क्या हो गया। तो इस तरह से उनको भी एकदम लग रहा था कौन था ये व्यक्ति, एकदम विशेष व्यक्ति था, बालक था ये, ऐसे इतना आकर्षक और इतना मधुरता से बोला, और मेरे को दूध ने आके दिया, तो दूध भी एकदम बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो उन्होंने दूध को पिया माधवेंद्रपुरी ने, और फिर वो तो दूध तो एकदम अमृत जैसा था उसके लिए। और फिर जो पॉट था उसको वहां पे उन्होंने बगल में रख दिया, और देखा कि वो लड़का तो आया नहीं कभी। तो माधवेंद्रपुरी जो है वो सो ही नहीं पाए, और उधर ही बैठे और जब करते रहे हरे कृष्ण महामंत्र। और फिर रात जब खत्म हो रही थी तो थोड़ा सा उनको नींद आने लगी बस। और जब नींद आने लगी, सारा उनकी बाहरी कार्यकलाप सब रुक गए, तब उनको एक स्वप्न आता है। उनके स्वप्न में भगवान, वो वही 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 जो लड़का है वो फिर से आता है, वही सेम लड़का जो दूध दिया था वो आता है। और फिर वो उनका हाथ पकड़ करके उनको लेके जाता है एक जंगल में, और वहां पे झाड़ी में लेके जाता है, और कहता है कि महादेव जी को दिखाता है वो झाड़ी, और कहता है कि देखो मैं यहाँ झाड़ी में रहता हूँ, और मेरे को बहुत ही ठंड लग रही है, और बहुत बारिश हो रही है यहाँ पर, हवा चल रही है, बहुत गर्मी है। तो तो आप सभी गांव वालों को लेके आओ और मुझे यहाँ से निकालिए इस झाड़ी से, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत ही एक्चुअली आखिर भगवान बोलते हैं कि कैसे यहाँ पर मेरे को बहुत गर्मी हो रही है, और मैं बहुत ही यहाँ पे ना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आप मुझे यहाँ यहाँ पे ये गोवर्धन के पर्वत पर ऊपर आप मुझे वहां पे जाकर के स्थापित करिए, ऐसा बोलते हैं, सच बोलते हैं। और फिर बोलते हैं कि आप वहां पे एक सुंदर मंदिर बनाइए, और वहां पर मेरी स्थापना कर दीजिए। और फिर बोलते हैं कि आप जो है खूब ठंडे पानी से, बहुत मात्रा में ठंडे पानी ला करके आप मेरे जो विग्रह हैं उनको आप अभिषेक करिए, उसको धुलिए, साफ करिए। तो अब बोल रहे हैं कि मैं बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा था माधवेंद्रपुरी, आप कहाँ थे, आप बहुत दिन से आपका इंतजार कर रहा था, कब माधवेंद्रपुरी आएंगे और मेरी फिर सेवा करेंगे। इस तरह से भगवान इंतजार कर रहे हैं, सोचिए आप। तो देखिए माधवेंद्रपुरी का कैसा भगवान के साथ किस प्रकार का आदान प्रदान हो रहा है। फिर बोलते हैं
कि मैंने आपकी सेवा इसलिए स्वीकार की, आपसे स्वीकार कर रहा हूँ सेवा, क्योंकि आपके अंदर बहुत ही मेरे प्रति प्रेम है ना, बहुत ही आकर्ष दिव्य प्रेम उन्माद है आपके अंदर, इसलिए मैं इस तरह से आपसे स्वीकार कर रहा हूँ। तो भगवान से का सेवा स्वीकार करते हैं भक्तों की, क्योंकि उनके बहुत सेवा भाव होता है, उनका प्रेम होता है भगवान के प्रति, इसलिए सेवा स्वीकार करते हैं। ऐसा नहीं भगवान को जरूरत है सेवा की, भगवान को सेवा की जरूरत नहीं है, लेकिन भगवान जो है भक्त के सेवा भाव और प्रेम को देख करके वो सेवा स्वीकार करते हैं, वो आदान प्रदान करते हैं इस प्रकार से। तो फिर बोलते हैं कि मैं इस तरह से यहाँ पे प्रकट होऊंगा गोपाल जो विग्रह है उसके रूप में, और सभी सब लोगों का फिर उद्धार होगा। तो आप मेरे को इस तरह से स्थापित करिए। तो मेरा नाम गोपाल है, और मैं गोवर्धन पर्वत को धारण करता हूँ। और मेरा वज्र वज्र जो थे वो राजा थे, वो वज्र जो कृष्ण के ही वंश में आते हैं, वज्रनाभ। तो वज्र के द्वारा मैं, वज्रनाभ जी के द्वारा मैं स्थापित किया था। और मैं यहाँ पर, मैं ही यहाँ का अधिष्ठाता हूँ। और जब जब मुस्लिमों ने यहाँ पे आक्रमण किया था, तो जो वहाँ के पुजारी थे उन्होंने वहाँ जंगल की इसी झाड़ी में मेरे को रख दिया था, फिर वो चले गए थे मैं डर के मारे। और तब से मैं यहीं पर हूँ। मुझे बहुत अच्छा हो गया कि अभी आप यहाँ आ गए हो, और अभी आप मेरे को यहाँ से निकालिए बहुत ही सावधानी के साथ। फिर वो कह करके वो जो सप्तम है वो लड़के चले गए। फिर माधुरपुरी उड़ जाते हैं स्वप्न से, और फिर सोचने लगते हैं ये क्या था सपना, इस सपने में कौन आया ये। तब समझ गए, ओ महादेव भाई। फिर सोचे कि अरे, फिर थोड़ा पश्चाताप करने लगे कि अरे भगवान स्वयं मेरे पास आए थे वो दूध लेकर के, वही लड़का तो फिर से मेरे सपने में आए और मेरे को बताया कि कहाँ पर गोपाल जी का विग्रह वो जंगल की झाड़ी में है। तो ये सोचते ही एकदम वो नो पश्चाताप की अग्नि जलने लगी। अरे भगवान को ही नहीं समझ पाया, अरे भगवान स्वयं आए मेरे पास। तो इस तरह से वो एकदम प्रेम उन्माद में आवाज चले गए, और फिर वहीं पे अचेतन होकर गिर पड़े वो प्रेम में एकदम। महादेव एकदम रोने लगे कुछ समय के लिए। तो उसके बाद उन्होंने अपना जो भगवान का जो आदेश था, गोपाल जी का आदेश, अभी उसका पालन करना है, तो फिर वो अपने आप को संभाले और फिर भगवान का आदेश पालन करने के लिए अग्रसर हुए। फिर उन्होंने सुबह जल्दी जल्दी नहा लिया, महादेवपुरी जाते हैं गाँव में, और फिर वहाँ सभी लोगों को सम्मिलित कर सबको इकट्ठा करते हैं वहाँ पे। और फिर सबको बोलते हैं, कहते हैं कि अरे, तो यहाँ जो गोवर्धनधारी हैं गोपाल जी, वो यहीं पे कहीं तो झाड़ी में जंगल में हैं, तो चलिए हमको वहाँ चलना है और उनको वहाँ से निकालना है। और बोल रहे हैं कि वहां पे जो झाड़ियां बहुत ही गहरी हैं एकदम, मतलब जंगल बहुत घना है, झाड़ियां हैं घनी हैं। तो हमको जाने के लिए आपको सर लेके आना पड़ेगा सब। जो क्या कहते हैं उसको, अ, हम्म, क्या बोलते हैं उसको, खुरपी खुरपी नहीं, कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी वगैरह सब लेके आइए आप, कि सब झाड़ियां ने काट करके निकालना होगा, और तब फिर हम गोपाल जी को वहां से निकालेंगे। तो ये सब सुन करके सभी माविनपुरी के साथ आते हैं बहुत प्रसन्नता के साथ, और उनके ही निर्देश के अनुसार से वो जाते हैं, सारे झाड़ी वगैरह को काटते हैं। और फिर जैसे जंगल काटते हुए, झाड़ियाँ काटते हुए जंगल के थ्रू जाते जाते, नवाज़ुद्दीन तो को पता है क्योंकि भगवान ने बताया था, रास्ता वगैरह सब उनको दिखाया था, कि हाथ पकड़ करके गए थे ना सपने में। तो फिर वहां पे सीधे लेके जाते हैं उस झाड़ी के पास ना, माधवेपुरी। और वहां झाड़ी में फिर काटते हैं तो देखते हैं कि सच में वहां पर ना एक विग्रह है गोपाल जी का, बहुत सुंदर विग्रह। उसमें बहुत सारा मिट्टी लगा हुआ है, घास फूस बहुत है। तो वो सब देख करके एकदम आनंद से जाते, चक्के से आते हैं, अरे ये तो यहाँ पर कैसे विग्रह है। और फिर उन्होंने जो विग्रह है उनको साफ वगैरह किया, लेकिन वो विग्रह बहुत भारी था, कोई भी व्यक्ति उसको उठा ही नहीं पा रहा था, इतना भारी था वो। तो फिर बहुत सारे लोग आकर के, जो बहुत मजबूती मतलब पहलवानी वाले जो लोग थे, पहलवान लोग जो थे, वो सब आते हैं, फिर उसको उठाते हैं, और फिर वो हिल के ऊपर, पहाड़ के ऊपर लेके जाते हैं। और फिर वहां पर एक बड़ा पत्थर पे उनका सिंहासन होता है, और दूसरा पत्थर निकाल वहां पे एक सपोर्ट के लिए डालते हैं। और बहुत सारे ब्राह्मण वहां पे आते हैं, और नौ ऐसा वाटर पॉट लेके आते हैं, गोविंद कुंड से पानी लाते हैं, और फिर वहां पर लेकर के उनको अभिषेक किया जाता है। फिर बाद में जाके 900 पॉट्स लेके आते हैं गोविंद कुंड से। और फिर बहुत सारे जो स्त्रियाँ गीत गाती हैं, बहुत सारा ड्रम्स वगैरह सब ऐसा पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा बजा करके सब गीत गाया जाता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। और फिर उस तरह से बहुत बड़ा उत्साह, और ये क्या कहते हैं उसको, उत्सव उत्सव होता है किसका, उनका स्थापना का, कि गोपाल जी की स्थापना हो रही है। सब लोग बहुत ही गाते हैं, नृत्य करते हैं, और खूब सारा दूध दही मक्खन सब लेकर के आते हैं उस फेस्टिवल के लिए। और बहुत प्रकार के से लाया जाता है प्रसाद, फूड वगैरह, तुलसी पत्ती, अलग अलग प्रकार के पुष्प, बहुत प्रकार के कपड़े, ऐसे बहुत सारा चीज लाया जाता है। और फिर भगवान को जो है बहुत सारा तेल भी लगाते हैं, बहुत सारा तेल अच्छा क्वांटिटी में लेके आते हैं।
ताकि उनका जो शरीर है वो एकदम चमकने लगे। और बहुत सारे मंत्रों का भी जप वगैरह कर रहे थे, जिससे कि सारा अमंगल चला जाए। और इस तरह से फिर भगवान का अभिषेक जब चालू करते हैं तो फिर ये तेल लगाते हैं। और फिर देखते हैं कि उनको फिर नहाते के लिए पंचगव्य यूज करते हैं, पंचामृत। पंचगव्य फिर पंचामृत वगैरह डाल के पूरा उनका महास्नान होता है। और फिर घी और पानी का खूब सारा मात्रा लेकर के फिर महास्नान करते हैं। पहले पंचगव्य पंचामृत और फिर महास्नान घी और पानी का करके करते हैं। और ऐसे 100 पार्ट्स में लेके आते हैं इस प्रकार से। तो ये महास्नान होने के बाद फिर से उनको सेंटेड ऑयल से फिर से उनको मसाज किया जाता है, ताकि फिर से उनका शरीर चमकने लगे। और फिर बाद में उनका सेंटेड वाटर से फिर से उनका अभिषेक किया जाता है लास्ट में। तो इस प्रकार से पूरा ये अभिषेक होता है। आपने मंदिर में देखा भी होगा अभिषेक कैसे करते हैं, बहुत सुंदर तरीके से। तो फिर उनको कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं डिटीज को, फिर उनको फिर चंदन लगाया जाता है, तुलसी माला पहनाई जाती है, अलग अलग प्रकार के तो सुगंधित पुष्प की मालाएं पहनाई जाती हैं। इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से वो पूरा स्थापना होती है। और फिर भगवान को जो है अगरबत्ती और दिया वगैरह सब लगाते हैं, दिखाते हैं। और फिर भगवान को अलग अलग प्रकार के जो खाद्य पदार्थ अर्पण किए जाते हैं। सो बहुत सारे लोग लेके आते हैं। तो और सेंटेड वाटर जो है ड्रिंकिंग पानी, पीने का पानी भी लेके आया जाता है बहुत सारा। और फिर पान खिलाते हैं भगवान को लास्ट में, तांबूला पान ये सब। तो इस प्रकार से भगवान का बहुत जोर शोर से सब है। तो अभी होता क्या है कि इस तरह से ना जो विलेज सारे गांव वाले भी पता चल जाता है कि यहाँ पे गोपाल जी का स्थापना हो रहा है। तो अगल बगल के सारे गांव वाले आकर के खूब सारा चावल दाल आटा सब लेके आने लगते हैं खूब सारा। और इस तरह से पूरा जो सतह होता है, पहाड़ का जो ऊपरी सतह है पूरा भर जाता है इस प्रकार से। और ऐसे ही ये केवल उतना ही नहीं, एक्चुअली हाँ उसके बाद फिर अर्पण किया जाता है। और और उस समय मतलब बना के पूरा सब अर्पण करते हैं सारा खाद्य पदार्थ। और कुछ लोग जो हैं वो पॉटर्स जो होते हैं वो लेके आते हैं, बहुत सारे कुकिंग पॉट्स लेके आते हैं ना, कुम्हार होते हैं। और फिर अगले दिन कुकिंग खुद भी करते हैं वो लोग। तो 10 ब्राह्मण होते हैं वो फिर कुकिंग करते हैं। और 5 ब्राह्मण जो हैं, तो 10 ब्राह्मण कुक करते हैं ग्रेन्स को, अनाज को। 5 ब्राह्मण कुक करते हैं सब्जी वगैरह, लिक्विड और ड्राई, ड्राई और लिक्विड सब्जी सब्जियों को। और इस तरह से अलग अलग प्रकार की सब्जी से का वर्णन किया गया है। और चपाती के लिए अलग लोग, तो खूब सारा राइस, खूब सारा चपाती, खूब सारा सब्जी अलग अलग पॉट में। तो राइस रहता है बहुत सारा, चपाती बगल में रहता है। अभी बहुत सारे पॉट में सब्जियां, लिक्विड की ड्राई सब्जी, लिक्विड सब्जी ऐसे बहुत सारे रखते हैं। और बहुत सारे दही दूध छाछ ऐसे अलग अलग प्रकार से, क्रीम स्वीट राइस सब ऐसे बना के खूब सारा ऐसा पॉट रहता है। इस तरह से होता है। तो इसको अन्नकूट का पूरा फेस्टिवल ऐसे मनाते हैं। और और महादेवपुरी स्वयं इसको अर्पण करते हैं, स्वयं महादेव अर्पण करते हैं। और ये हरे कृष्णा, महादेवपुरी स्वयं अर्पण करते हैं। और अर्पण करने के बाद पूरा का पूरा जो प्रसाद रहता है, भगवान तो खाते ही हैं लेकिन खाने के बाद फिर से एज इट इज प्रसाद फिर से रहता है। तो वहीं पे तो सब भक्त लोग फिर खाते हैं वहाँ पे। तो यहाँ तो इस प्रकार से होता है। फिर क्या होता है कि बहुत सारे बाकी गांव वाले भी पता चल जाते हैं, और ऐसे पूरे देश में पता चल जाता है। अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं। तो ऐसे अन्नकूट जो त्योहार ऐसे बनता ही गया, मतलब ऐसे लगातार ऐसे उत्सव ही उत्सव बन रहा था हर दिन ना। अलग अलग तो सब लोग वेटिंग लिस्ट में थे कि अभी हम मनाएंगे अन्नकूट फेस्टिवल। फिर वो कहते थे हमारा बुकिंग कर दो, हमारा बुकिंग, ऐसे करके पूरा ऐसा फेस्टिवल ही हो रहा था। ऐसे चलता ही गया फेस्टिवल्स। तो समझ इतना भयंकर फेस्टिवल हो रहा था, चलता ही गया चलता ही गया। तो ऐसे ऐसे फेस्टिवल होता गया। उसके बाद और वहाँ पे मादनपुरी ने दो एक ब्राह्मण आए थे बंगाल से। उनको मादनपुरी जो है अ, दीक्षा देते हैं। और उन दोनों ब्राह्मणों को वहाँ पर विग्रह की सेवा में लगा देते हैं। और बहुत सारे अन्य ब्राह्मणों को भी वहाँ पे दीक्षा देते हैं मादनपुरी, उनको अलग अलग प्रकार की सेवाओं में लगा देते हैं। और तो दो ब्राह्मण वहाँ से आते हैं बंगाल से। उनको खासतौर से उनको बहुत माधुरी बहुत पसंद करते हैं, और फिर उनको ये सेवा देते हैं विग्रह की सेवा करने का। वो बाद में आते हैं उनको। तो ये देख सकते हैं कितने सारे लोग सब महाप्रसाद लेकर बहुत सारा लोग आते हैं। तो इस प्रकार से सब चल रहा था। फिर क्या होता है कि लगभग 2 साल के बाद, देखिए इन दिस फेज से सेवा होती गई 2 साल तक। फिर एक दिन महादेव पुरी को एक सपना आता है।
और सपने क्या आता है, वो सपना आता है, ये दूसरा सपना आता है अभी, है ना? तो ये सपने में क्या बोलते हैं भगवान, भगवान बोलते हैं कि मेरा जो अभी तापमान है अभी भी कम नहीं हुआ है, आप जो है मेरे लिए चंदन लेके आइए। कहाँ से? जो मलया का जो प्रोविंस है, मतलब मलया राज्य, जो जगह उड़ीसा में, वहां पे जा करके आप मेरे लिए चंदन लाइए मलया से, और मेरे को पूरा चंदन का लेप लगाइए ताकि मेरे को ठंडक पहुंचेगी। सो तो जगन्नाथपुरी से आप लेके आइए चंदन, और आप ही लेके आइए, तो और कोई कर नहीं सकता। तो फिर महादेवपुरी तुरंत एकदम प्रेम में भाई भर हो गए कि अरे भगवान मेरे सपने आकर कैसे रामजी को आदेश दिया, तो तुरंत निकल गया वहां से, एक तुरंत निकल गया। उन्होंने बस अरेंजमेंट किया, सबको अपना सेवा बांट दिया, तुम ऐसे करो तुम ऐसे करो, पूरा सेवा, विग्रहों का कैसे सेवा करना है, कैसे कुकिंग करना है, सब पूरा सेवा डिवाइड करके मैनेज कैसे हो जाएगा सब, फिर वो निकल गए। और अकेले निकल गए इस तरीके से। और फिर वो अद्वैत आचार्य के घर पे ही पहुंचते हैं, वहां पर उनको दीक्षा भी देते हैं। और फिर जाते हैं वो रमुना पहुंचते हैं। रमुना मतलब जगन्नाथपुरी के पहले, तो वहां पहुंचते हैं और फिर वहां गोपीनाथ जी का दर्शन करते हैं। तो जब वहां पे दर्शन कर रहे होते हैं, तो वहां बैठते हैं और भगवान को अलग अलग प्रकार के खाद्य पदार्थ अर्पण किए जा रहे होते हैं, भोग अर्पण किए जा रहे होते हैं। तो वहां पर जब ऐसे, फिर वो पूछते हैं कि क्या क्या अर्पण किया जाता है, तो वहां पे उन्होंने बताया इसके बारे में, अमृत केली के बारे में, कैसे अमृत केली भी यहाँ पे अर्पण की जाती है। तो जब अमृत केली की बात की, उसको बहुत गुणगान किया कि यहाँ ये कहीं नहीं मिलता है, यहीं पे है, ऐसे बताते हैं। और इसको 12 ऐसे अर्दन पॉट्स में ऐसे अर्पण किया जाता है अमृत केली में, अमृत केली को। तो एकदम अमृत की तरह होता है, ऐसे करके बता रहे थे। तो फिर ये सोचते हैं मादनपुरी की, ये मैं अपने गोपाल जी के लिए अगर बना पाऊँ, थोड़ा ये टेस्ट करने को अगर मिल जाएगा, बिना मेरे को बोले टेस्ट करने को मिल जाएगा, और मैं गोपाल जी को खिला पाऊंगा, तो कितना अच्छा होगा, ऐसे सोच रहे थे। और वो उसी समय पे वहां पर वो चल रहा था, ऑफरिंग चल ही रहा था, ऑफरिंग चल रहा था, वो ऐसा सोचने लगे, अगर ये मेरे को ही मिल जाएगा तो मैं इसको अगर टेस्ट समझ में आ जाएगा, तो मैं ऐसे बना कर गोपाल जी को भी अर्पण करूँ। लेकिन तुरंत ही फिर वो बहुत मायूस हो गए सोच के, क्योंकि अरे अभी तो अर्पण भी नहीं हुआ और मैं ऐसा खाने की सोच रहा हूँ। वही भाव नहीं था, वो तो भगवान के सेवा के हिसाब से सोच रहे थे। लेकिन वो तुरंत अपने आप को दोषी मानते हैं, अपराधी मानते हैं, और फिर वहां से तुरंत निकल जाते हैं और फिर चले जाते हैं मार्केट में। फिर होता क्या है कि फिर तुरंत वहां से कुछ समय रात में जो गोपीनाथ जी हैं वो दर्शन देते हैं पुजारी को कि स्वप्न में, और बोलते हैं कि आप जो है ये माधवेंद्रपुरी को, मैंने एक खीर चुराया हुआ है, ये मेरे रूम में, मतलब ऑल्टर में, मेरे जो कपड़े के पर्दे के थोड़ा सा इधर मैंने हल्का सा अलग करके उसको रखा है, छुपा के रखा है। तो आप जो है वहां से उसको एक पॉट को वहां से जो छुपाया है मैंने, वो जा करके आप माधवेंद्रपुरी को ढूंढो, वहाँ मार्केट में है, वहां पे जाके उनको आप दे दो, सन्यासी है माधवेंद्रपुरी। तो फिर ये जो थे, ये तुरंत उठ जाते हैं और उठ के तुरंत स्नान करते हैं, रात में खुलते हैं, देखते हैं सच में है वहां पे। और फिर वो जाते हैं उस पॉट को लेकर के और पूछते हैं, अरे ये कौन है माधवेंद्रपुरी? वो जाते हैं उस मार्केट में, बोलते हैं माधवेंद्रपुरी माधवेंद्रपुरी, हे माधवेंद्रपुरी 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 माधवेंद्रपुरी, ऐसे चिल्लाते रहते हैं। और कहते हैं अरे आपके लिए भगवान ने खीर चढ़ा के रखा है, आप बहुत भाग्यशाली हो, आप ये खीर लीजिए, आप खाइए, आपके लिए भगवान ने खीर चुराया। ऐसे करके बहुत चिल्लाते हैं। तो सब लोग देख रहे हैं कौन है, किसके लिए बुला रहे हैं, कौन उसको। तभी माधवेपुरी वहां पे सुनते हैं कि अरे कि ये जो खीर लेके आए हैं माधवेपुरी कौन है, ऐसे सुन रहे हैं कि उनका नाम सुनते हैं, तो बताते हैं कि हाँ मैं हूँ माधवेपुरी। तो फिर बताते हैं कि अरे भगवान ने आपके लिए खीर चुराया है। ये सुन करके ही एकदम वो फिर प्रेम और मार्ग में चले जाते हैं। फिर भगवान जो है वो मेरे लिए कैसे चुरा सकते हैं? और इस तरह से फिर वो खीर को खाते हैं और कुछ बोल नहीं पाते, एकदम खीर को खा के एकदम भाव विभोर हो जाते हैं। और खीर खाने के बाद वो जो पॉट रहता है ना, पॉट को भी ब्रेक कर लेते हैं बहुत सारे पीसेस में। वो पीस में ब्रेक करके फिर वो हर दिन एक एक उसको भी खाते थे, पीस को भी खाते थे। इतना वो मतलब इतना भगवान से प्रेम करते हैं। तो इस तरह से कर रहे थे। उसके बाद फिर क्या होता है, उसके बाद फिर ये सोचते हैं कि अरे मैं यहाँ तो बहुत फेमस हो जाऊंगा, क्योंकि भगवान ने मेरे लिए खीर चुराया, तो मैं तुरंत यहाँ से निकल जाता हूँ, निकल जाते हैं वहां से, जगन्नाथपुरी जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि भगवान जो है उनकी योजना से उनका जो फेम था, उनका जो प्रसिद्धि था वहां तक चला था, जगन्नाथपुरी वहां से पहले ही पता था सबको कि माधवेंद्रपुरी आने वाले हैं, और उनके लिए भगवान ने खीर चुराया है। तो उनको बहुत अच्छे सत्कार वगैरह करते हैं, आदर सत्कार करते हैं, फिर बताते हैं माधवेंद्रपुरी की भाई उनको गोपाल के ऐसे दर्शन, गोपाल जी ने उनको ऐसा आदेश दिया है चंदन लाने के लिए। वहाँ सब लोग मदद करते हैं उनकी, गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लेना पड़ता है। फिर उनको बहुत सारा चंदन और कपूर
बहुत सारा ऐसे देते हैं, और दो लोग भी देते हैं, एक ब्राह्मण और एक व्यक्ति जो उसको लेके जाएगा, असिस्टेंट। तो वो दो व्यक्ति भी देते हैं जो पूरा चंदन कैरी करके जाएंगे, है ना। तो फिर माधवेश्वरी वहां से चंदन वगैरह कैरी करके कैंफर और चंदन चंदन सैंडलवुड पल्प और कैंफर लेके फिर वापस आते हैं। और वापस आके फिर जगन्नाथपुरी में, सॉरी, फिर रमना में आते हैं। और जब रमना में आते हैं, वहाँ रुकते हैं। तो अभी बीच में भी जब आते हैं वहाँ जगन्नाथपुरी से रमना, तो उसके उस रास्ते में भी काफी उनको, है ना, परिश्रम करके आना पड़ता है। पूरा लेके आ रहे हैं तो बहुत परिश्रम करके आते हैं, और उनको सारा पेपर वगैरह दिया जाता है, क्योंकि उस समय बहुत सारा मुस्लिम किंग राजा वगैरह रहते थे, तो पेपर उनको दिखाना पड़ता है कि भाई इस तरह से है, तो परेशान नहीं करेंगे, तो उस तरह से वो आते हैं। और फिर जब रेमुना में आते हैं, तो फिर वहाँ पे खीर उनको देते हैं, वहाँ पे जो प्रीस्ट होते हैं भगवान, वो खीर खाते हैं। उसके बाद फिर जब माधवेश्वरी वहाँ पर रेस्ट लेते हैं, तो फिर भगवान फिर से ड्रीम में आते हैं। ये तीसरी बार स्वप्न में आ रहे हैं। तो वैसे चौथी बार स्वप्न में आते हैं, एक स्वप्न में तो पुजारी के आ गए थे, उसको काउंट नहीं कर रहे। माधवेश्वरी के तीसरी बार स्वप्न में आ रहे हैं। और फिर माधवेश्वरी के स्वप्न में बोलते हैं भगवान कि आप जो हैं, ये चंदन गोपाल जी की जगह मेरे को ही लगा दी, क्योंकि मैं और गोपाल जी अभिन्न है। मैं गोपीनाथ हूँ और गोपाल जी और मैं अभिन्न है। तो आप यहीं पे सारा चंदन और सब मिक्स कर दो, चंदन और कपूर, और सब यहीं पे लगवा दीजिए, डेली थोड़ा करके लगवा दीजिए। उससे भगवान बोल देते हैं। वो बोलते हैं ये मेरा आदेश है, आप ऐसा मत सोचो कुछ और। नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि मैं अभिन्न हूँ गोपाल से, आप मेरे को यहीं पे लगाओ। ऐसे भगवान स्ट्रिक्ट आदेश देते हैं। तो फिर माधवेश्वरी फिर रुक जाते हैं, फिर वहीं पर रुकते हैं जब तक पूरे चंदन का लेप नहीं खत्म नहीं होता। तो कोई पूछ सकता है प्रश्न कि ऐसा क्यों बोला भगवान ने? भगवान ने ऐसा आदेश इसलिए दिया क्योंकि भगवान जो है नहीं चाहते थे कि माधवेश्वरी इतना कष्ट उठा करके फिर वापस जाए। और वहां बीच में रास्ते में बहुत सारे और कष्ट आ सकते थे, क्योंकि मुस्लिम राजा गौरव का सब पूरा वहां पे शासन चलता था। तो वो लोग सब परेशान कर सकते थे या कुछ हो सकता था, तो इसलिए भगवान जो है वो सारे कष्ट को सोचते हुए वो माधवेश्वरी को ऐसा आदेश दिए ताकि माधवेश्वरी को सारा कष्ट झेलना ना पड़े। और शुरू में जो भगवान ने आदेश दिया चंदन लेके आने के लिए, ये दिखाने के लिए कि माधवेंद्र को कितना अगाध प्रेम है उनके प्रति, पूरे जगत को दिखाने के लिए भगवान ने इस तरह का आदेश दिया, कि आप चंदन लेके आइए। तो प्रभुपाद जी परपोर्ट में बहुत ज्यादा बताते हैं कि कैसे है, जो भगवान का भक्त होता है वो कुछ भी परवाह नहीं करता है किसी भी चीज की। भगवान की सेवा के लिए कितना भी उसको डिस्कम्फर्ट आ जाए, उसको तनिक भी भगवान का जो भक्त होता है उसके बारे में तनिक भी परवाह नहीं करता है। ऐसा करके कोई भी विघ्न हो, कोई भी प्रकार का समस्या हो, कुछ भी नहीं वो देखता है। क्योंकि वो केवल भगवान को पसंद करना चाहता है। वो भी भक्ति ठाकुर भी कहते हैं, तुम्हारे सेवाय जय तो दुखा सही तो परम सुखा। भगवान की सेवा में अगर कोई दुख भी आता है, कोई अड़चन आती है, कोई समस्या आती है, वो सबसे बड़ी बड़ा सुख का कारण बनता है किसके लिए? जो भगवान का भक्त होता है। देखो ये है प्रगाढ़ प्रेम, प्रगाढ़ सब लोग बोल सकते हैं मेरे पीछे, प्रगाढ़ प्रेम मेरा ए स्वभाव आचार। कुछ गाढ़ आवाज ही नहीं। प्रेम ये स्वभाव प्रेमने आचार। स्वभाव आचार। निज दुख विघ्नाधिर ना करे विचार। निज निज दुख 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 विघ्नाधिर विघ्नाधिरा न ना करे करे विचार। विचार। तो बताते हैं कि किसी प्रकार का देख सकते हैं इन पर्सनल इनकन्वीनियंस है या कोई समस्या है, तो भगवान के बाद उसको देखते ही नहीं है ना। वो तो केवल भगवान की सेवा करने के लिए ही आतुर होते हैं। तो हम सब लोग जब भगवान की सेवा कर रहे हैं ना, तो बहुत प्रकार के आएंगे, समस्या आएंगी, है ना। हमारा शरीर में कभी कुछ समस्या आएगा, हमारा मन कब कॉपरेट नहीं करेगा, कभी हमारे पास हमारे रिसोर्सेज नहीं होंगे सेवा करने के लिए। हाँ, कभी हमारे को कुछ भक्त लोग कॉपरेट, ऐसा लगेगा कि भक्त कॉपरेट नहीं कर रहे हैं हमारे लिए, या कुछ अनबन हो जाता है, कोई मिसकम्युनिकेशन हो जाता है ना। कुछ हमारा स्वभाव मैच नहीं करता है, सब बहुत प्रकार की अड़चने आ सकती हैं। कुछ प्रलोभन हमें सताते हैं, कुछ हमारी जो कंडीशनिंग्स हैं, काम क्रोध लोभ मोह वगैरह हमें कुछ अटैक कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के डिस्कम्फर्ट आएंगे कृष्ण भावनामृत में जब हम सेवा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर हम सेवा कर रहे हैं तो ये सारे अड़चने आती हैं। लेकिन भक्त क्या सोचता है, ये सारे अड़चने जो हैं ये इसके सुख का कारण बनती है भक्त के लिए। क्यों? आप कहाँ हो अबे ब्रो? ऐसा लग रहा है कि भूत ऊत है पीछे आपके बैकग्राउंड में। क्या, कहाँ बैठे हैं, क्या कर रहे हैं आप? लाइट कट गया ना, वो टॉर्च जलाए। जैसे टॉर्च जला के बैठे हैं क्या? ऐसा लग रहा है पीछे भूत जो है वो घूम रहा है ऐसे पीछे पीछे आपके बैकग्राउंड में। एकदम हॉरर हॉरर आपका बॉक्स दिख रहा है। ठीक है। तो भक्त जो है वो बिल्कुल ही परवाह नहीं करता है ना।
नास्तिश्चा पादताम पिनिष्टुमा। तो कभी भी और अब भगवान की सेवा से कभी भी वो डेविएट नहीं होता है। भगवान के जो भक्त होते हैं, आप देखिए प्रभुपाद के जीवन में भी कितने सारे कष्ट आए, लेकिन प्रभुपाद जी बिल्कुल भी निराश नहीं हुए, वो सेवा में लगे ही रहे। फिर भक्त के लिए वही है एकमात्र, उनका आश्रय सेवा, भगवान की सेवा करना है बस। कोई भी स्थिति हो, कितना भी खतरा आ जाए या आ जाए। हनुमान जी का भी देखते हैं कैसा, हनुमान जी जब सीता मैया को ढूंढने के लिए जाते हैं लंका, हमने रामायण में चर्चा किया था, तो कितने सारे आते हैं वहां पे अड़चने बीच में, कितने सारे राक्षस वगैरह आते हैं, राक्षसियां आती हैं। ये हनुमान जी भी बिल्कुल टस से मस नहीं होते, वो अपना एकदम एकनिष्ठ सेवा में। तो सेवा में आएंगे जिस कंफर्ट स्कैर्सिटी नहीं पड़ी, लेकिन भक्त जो है वो उन सबको आनंद का स्रोत सोचते हैं। सेवा में कोई बाधा आए, दुख आए, कष्ट आए, वो तो आनंद है, उसमें कभी भी हमें आ, दुख नहीं है। जैसे कोई प्रेम किसी को हम करते हैं तो उसमें अड़चने आती कि नहीं आती, कभी दुख आता होगा, लेकिन उसको हमें आनंद लगता है। तो हमें लगता है कि नहीं नहीं ये ठीक है, कोई बात नहीं, क्योंकि हम उनको प्रेम करते हैं, है कि नहीं। जैसे आपके कोई पिताजी आए, माता जी आए, या कोई प्रेमी, कोई जिनको आप बहुत अच्छे से प्रेम करते हैं, कोई मित्र हैं, कोई स्टेशन आते हैं, तो उनका आप लगेज वगैरह उठाते हैं कि नहीं, लगेज उठाने में तकलीफ होता है कि नहीं होता है। भारी भरकम तो है लगेज, गर्मी में आए हैं, और उसके बाद उठा करके लेके जाना है, लेकिन हम उठाते हैं, क्यों उठाते हैं, क्योंकि प्रेम करते हैं। उसको उठा करके हमको आनंद आता है, वो कष्ट होता है तो हमको आनंद आता है नहीं, क्योंकि हम उनके पसंदा के लिए कर रहे हैं, है कि नहीं। तो वो उसमें आनंद आता है। उस प्रकार से जो भगवान की भक्त करते हैं, भगवान को इतना प्रेम करते हैं, तो भगवान को खुश देखना चाहते हैं, भगवान की खुशी के लिए उनकी सेवा करते हैं, और उस सेवा में कुछ विघ्न तकलीफ वगैरह आती है तो उसकी परवाह नहीं करते, उसको सुख मान के उसको सुख समझते हैं। तो इस प्रकार से, और फिर जो है भगवान आ, फिर माधवेंद्रपुरी जो है, फिर इस तरीके से उधर ही रुकते हैं, और उसके बाद फिर वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, वहाँ चतुर्मास 4 महीने रुकते हैं, और फिर वो जाते हैं बाद में। तो इस प्रकार से पूरा बताया है यहाँ पे माधवेंद्रपुरी कथा, कि कैसे माधवेंद्रपुरी जो है भगवान के इस प्रकार के दिव्य प्रेम में होता है। और माधवेंद्रपुरी एक श्लोक बोला करते थे, जो कि यहाँ पे बताया है, श्लोक मैं आपको बताता हूँ। और वो श्लोक जो है केवल 3 लोगों को ही पता है। कौन कौन? राधा रानी, चैतन्य महाप्रभु, और माधवेंद्रपुरी, और किसी को नहीं पता उसका अर्थ, उसका सही जो भाव है। वो 3 लोग ही जानते हैं उसका एकदम मर्म, आंतरिक मर्म केवल 3 लोग जानते हैं। वो श्लोक ये है: आई दीन दयाद्रनाथ हे मथुरानाथ कादवलोक्य से हृदय त्वदालोक कातरम दयित भ्राम्यति किम करोमि अहम, ओ माय लॉर्ड, ओ मोस्ट मर्सीफुल मास्टर, मास्टर मथुरा, when shall I see you again? Because of my not seeing you, my agitated heart has become unsteady. O most beloved one, what shall I do now? तो बोल रहे हैं कि भगवान, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूँ, देख पा रही हूँ, ओ मथुरा के नाथ, ओ मेरे प्रभु, मैं कब आपको फिर से देख पाऊंगी। तो मैं आपको नहीं देख पाने के कारण मेरा हृदय जो है बिल्कुल वो स्थापित हो रहा है, और अस्थिर हो रहा है। अब मैं क्या करूं? हे मेरे प्रेमी। तो बस बताते हैं कि हमारा जो संप्रदाय है, वो हमारे को विप्रलंबा भाव में कैसे भगवान का स्मरण करना है, सेवा करना है, कैसे फीलिंग ऑफ सेपरेशन, मतलब कि भगवान से हम नहीं अभी उनके साथ हैं, या अभी हम भगवान को ना प्राप्त करके हम दीनहीन हो चुके हैं, तो कैसे हम भगवान को फिर से प्राप्त कर पाएंगे। ये भाव होता है ना, हमारा जो संप्रदाय हमें ये भाव सिखाता है, तो हमारे लिए बहुत अनुकूल है, क्योंकि हम सब भी उसी स्थिति में हैं, है ना। अभी हमें कृष्ण का दर्शन नहीं हुए हैं, हम अभी कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त किए हैं, तो वो एक सेपरेशन का फीलिंग रख करके, हमें एक विप्रलम्ब का फीलिंग रख करके, सेपरेशन का फीलिंग रख करके हम अपने भक्ति को बहुत अच्छे से तीव्र कर सकते हैं। यही सीख है चैतन्य महाप्रभु की भी। तो ये जो श्लोक है, ये माधवेंद्रपुरी जो है गाया करते थे बहुत। और ये केवल उनको और राधा रानी और चैतन्य महाप्रभु को, 3 लोगों को ही पता था। तो चैतन्य महाप्रभु इस श्लोक को पढ़ करके बहुत एकदम एकदम एक्सेसिव चले जाते हैं, वो भी अचेतन होकर गिरने लगते हैं। और वो उस समय जब ये याद करते हैं कि कैसे माधवेंद्रपुरी ने ये श्लोक बोला था, और वो श्लोक को आई दीना करके इतना ही बोल पाते हैं, ज्यादा बोल भी नहीं पाते, है ना। केवल आई दीना आई दीना आई दीना करके, देखिए आई दीना कर करके बोल के फिर गिर जाते हैं और रोने लगते हैं। और वो एकदम भाव भी हो जाते हैं, क्योंकि वो एकदम भाव में चले गए, जो माधवेंद्रपुरी का जो भाव था। तो कहते हैं यहाँ पे कि माधवेंद्रपुरी के भाव को ही चैतन्य महाप्रभु ने पकड़ा था, वहां से लिया था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान है, स्वयं राधा रानी है, और सब सारा तो वहीं से आता है, लेकिन इस लीला में देख सकते हैं कैसे कि चैतन्य महाप्रभु जो है माधवेंद्रपुरी को ही श्रेय देते हैं ये भाव सिखाने के लिए, कि कैसे विपणन में भगवान की सेवा करना हो, भगवान के प्रति ऐसा विरह महसूस करना। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है खूब वहां पे लोटपोट होते हैं, गिरते हैं। हाँ, तो ऐसे बहुत सारा जो अष्ट शास्त्रीय विकार से दिखा वो होता है वहां पे।
तो फिर बाद में बाकी लोग घेरा बना लेते हैं, देखते हैं चैतन्य महाप्रभु को। तो भगवान महाप्रभु फिर अपने बाहरी चैत्र में आते हैं, और उसके बाद फिर वहां पर वो खीर अर्पण किया जाता है उनको। भगवान खीर खाते हैं, 5 12 आते हैं तो 5 खीर ले लेते हैं, 5 5 पॉट अपने भक्तों को देते हैं और खुद भी खाते हैं। और इस प्रकार से गोपी तो वहां पे लिखते हैं चाहे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कि भगवान गोपीनाथ जी के रूप में पहले तो दिए सारा खीर खाए, और फिर चैतन्य महाप्रभु के रूप में 5 खीर का पॉट लिया, उसमें से खुद फिर खाए। तो एक तो भगवान के रूप में खा लिया, फिर भक्त के रूप में भी खाते हैं बाद में। इस प्रकार से बताते हैं। और फिर इस प्रकार से फिर यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं कि वो भक्तों को खिलाते हैं इस तरह से खीर, खुद भी खाते हैं। और फिर अ, और फिर वहां पे खूब कीर्तन होता है रात में। और फिर अगले दिन सुबह मंगल आरती होता है, और वहां पे सब लोग मंगल आरती अटेंड करते हैं। तो आप सब लोग भी करते हैं ना मंगल आरती अटेंड डेली? मंगल आरती अटेंड किया जाता है, सत्यमा भी अटेंड करते हैं मंगल आरती, देखो आप। तो इस प्रकार से अपने माधवेंद्रपुरी और गोपीनाथ और गोपाल जी का इस तरह से दिव्य गुणों का अच्छा स्मरण करके, गुणगान करके चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल भाव विभोर रहते हैं। तो फिर इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि कैसे मैंने अभी सारा आपको ये कहानी बताया है। और जो भी कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं कि मैंने ये बताया है चैतन्य महाप्रभु का कैसा प्रेम भक्तों के प्रति, और माधवेंद्र की पूरी कथा बताई। और जो भी इसको सुनता है इस पूरे नरेशन को श्रद्धा के साथ, तो उसको भगवान के चरण कमल पर जरूर प्रेम प्राप्त होगा। इस प्रकार से वो आशीर्वचन भी देते हैं और अपने कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो पूरा ये कथा है। तो ये जो पूरी कथा है, इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है कि कैसे भगवान जो है माधवेंद्रपुरी के प्रेम को इतना उनके हृदय को छूता था कि वो स्वयं 3 बार उनके स्वप्न में आकर के उनको आदेश देते हैं, उनसे सेवा लेते हैं। भगवान स्वयं सेवा लेते हैं। तो देखिए, भक्त इतना प्रेम जब करेगा तो भगवान स्वयं सेवा लेने के लिए आतुर होते हैं। इस प्रकार से तो हमको सेवा दिया जाता है, हम सेवा करने के लिए आतुर हैं। लेकिन भगवान जो है, ऐसा भक्त जो उनसे प्रेम करता है उससे सेवा लेने के लिए आतुर होते हैं। इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो ये कितनी बड़ी बात है ये। तो सेवा जो एक प्रिविलेज है, क्योंकि भगवान की सेवा करना एक प्रकार का हमारे ऊपर एक भगवान की दया है, हमको सेवा का मौका मिल रहा है। तो ये चीज है। दूसरा है कि माधवेंद्रपुरी ये बहुत विशेष व्यक्ति है। जैसे मैंने बताया कि आध्यात्मिक जगत में कल्प वृक्ष और जो माधुर्य भक्ति है उसका जो बीज माधवेंद्रपुरी से आता है। जो कि उनके उनके पहले मध्वाज संप्रदाय में ये नहीं था माधुर्य भक्ति। लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु जो है माधवेंद्रपुरी, चैतन्य महाप्रभु ने बाकी उसको और आगे लिखा है, लेकिन माधवेंद्रपुरी से ही शुरुआत होती है। फिर ईश्वरपुरी, फिर चैतन्य महाप्रभु, और फिर नित्यानंद तो प्रभु जी अद्वैताचार्य। साउंड इधर कम आ रहा है, बाकी को कैसे आ रहा है पता नहीं। अभी तो पूरा हो प्रभु गया सही आ है। रहा है, साउंड सही आ रहा है प्रभु। और फिर तीसरा ये कैसे माधवेंद्रपुरी जो है कितना परिश्रम करके वो इस प्रकार से है ना भगवान की सेवा करते हैं, कितना अथक परिश्रम करते हैं। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भगवान का जो भक्त होता है वो भगवान की सेवा के लिए कितना परिश्रम कर सकता है। तो माधवेंद्रपुरी पूरा मतलब अच्छा, तो आप याद करते हैं कैसे माधवेंद्रपुरी जो थे वो तुरंत सब छोड़ करके चले गए अकेले, जंगल जंगल पूरा, समझो कितना कोसों कोसों मील दूर। कहाँ वो थे वृंदावन में, फिर कहाँ जाते हैं जगन्नाथपुरी, पूरा चल के जाते हैं। और पूरा एकदम जंगल के बीच के रास्ते, कुछ डरते नहीं, कुछ नहीं, चले गए ऐसे ही। और फिर वहां जाकर के चंदन को भी लेके आते हैं, कितना कष्ट जाता है। तो चेतन आप उसको याद कर करके एकदम पागल हो रहे हैं प्रेम से, कह रहे कैसा ही माधवेंद्रपुरी कितना परिश्रम किया मेरे लिए। और ये फिर दया करके भगवान ने कहा कि नहीं, तुम इधर ही लगा दो। फिर वापस नहीं जाओ, इधर ही लगा दो कि मेरे को ठंडक पहुंच जाएगी। तो आदेश देते हैं माधवेंद्रपुरी को। तो भगवान जो है एकदम, तो इसलिए हमें भी ना ऐसा भगवान के लिए सेवा करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हम इतना भगवान की सेवा करें भगवान का हृदय करुणा में हो जाए। भगवान लॉर्ड शुड फील पिटी ऑन अस, अरे दिस फेलो इज वर्किंग सो हार्ड। तो हमको ऐसे गधे की तरह काम करने का सोचना चाहिए कि मैं गधा बन जाऊंगा भगवान की सेवा, प्रभात के मिशन में गधा बन के सेवा करूंगा। कितना होगा, जितना प्रभात की पुस्तक बांटूंगा, प्रभात के ग्रंथों का पढ़ करके दूसरों को शेयर करूंगा, है ना, प्रसाद का वितरण करूंगा, लोगों को भगवान के नाम के बारे में बताऊंगा, है ना, जो भी सेवा है वो पूरा सेवा करूंगा जी लगा के। तो इस तरह का भक्त का भाव होता है। क्योंकि जब इस तरह भगवान देखते हैं कि भक्त कैसे करके संघर्ष है उसके जीवन में, लेकिन वो पूरा सेवा कर रहा है, मेरे को पसंद करने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है। तो ऐसा जो भक्त होता है वो भगवान के हृदय को छू जाता है ना। तो फिर भगवान जो है उसको दया दे ही देंगे। इस प्रकार से तो लॉर्ड शुड फील पिटी ऑन अस बाय सीइंग आवर हार्ड वर्क।
तो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज इस तरह से करते थे, थक वो भी ऐसे ही थे, देखो टायरलेसली सेवा करते थे। आप लोगों ने सुना होगा उनके बारे में कि बिल्कुल टायरलेसली, मतलब गोपाल कृष्ण महाराज का ऐसा रहा है कि कभी ऐसा 11 12 1 बज जाता था रात को सोते, फिर वो सुबह मंगल आरती के लिए रेडी हो जाते थे। तो इस प्रकार से उनका जीवन रहा, नॉट ऑर्डिनरी थिंग। फिर भी मंगल आरती में रहेंगे वो फिर वो करते रहेंगे आरती कैसे। और आपने देखा होगा चेतन वास्तव में भी कैसे वो आरती कर रहे हैं, आपने वो वीडियो देखा होगा, बेड पर लेट करके देखा क्या आपने वो वीडियो? चेतन अवस्था में भी है लेकिन वो आरती कर रहे हैं बेड पे लेटे लेटे, जब वो अंतिम समय में थे। तो इस तरह से भक्त का जो चेतना है पूरा भगवान में लग जाता है, भगवान के परिश्रम करते रहते हैं वो, भगवान के लिए बिल्कुल लड़ते रहते हैं। तो हमारे लिए ऑप्शन नहीं है, हम या तो भगवान की सेवा के लिए परिश्रम करेंगे, नहीं तो भौतिक जगत के लिए परिश्रम करेंगे। भौतिक जगत के लिए परिश्रम सभी करते हैं, प फ ब भ म, पता है आपको, परिश्रम, फिर फेम, फिर बंधन, फिर भय, फिर मृत्यु, ये निश्चित है। तो पवर बोलता है, लेकिन अपवर क्या है कि हम ये ना करें, हम भगवान की सेवा में अपने पूरा परिश्रम करें। तो परिश्रम करना, बुद्धि लगाना, कार्य करना, ये सब के लिए होता है, लेकिन हम किसके लिए करते हैं वो हम चूज कर सकते हैं। अगर हम भगवान की भक्ति के लिए करेंगे तो उसमें हमें परम आनंद देंगे भगवान, उससे हमारा परम कल्याण होगा। लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने देश के लिए करते हैं, अपने समाज के लिए करते हैं, वो तो हर कोई करता है, ये कोई इसमें निस्वार्थ नहीं है। हर कोई अपने परिवार और देश के लिए करता है, कौन नहीं करता है? ये भी सब सब अहंकार है। तो या तो मैं या तो मेरा, इसको कहते हैं एक्सटेंशन, एक्सटेंडेड फॉल्सिंग। तो केवल अपने परिवार के लिए कमाना, ये तो हर कोई करता है, वो कौन सी बड़ी बात है? नो, इट इज सिंपली सेम थिंग वी आर डूइंग। तो इसमें कोई कोई भी इसमें ग्लोरियस नहीं है। लेकिन वही सेवा, वही एनर्जी जो हम दे रहे हैं इतना, वो अगर हमने भगवान की सेवा या भक्त की सेवा के लिए कर दिया तो वो परम आनंद देता है भगवान को, उससे हमारा परम गंतव्य प्राप्त होगा। हम समझ सकते हैं आप? उतना भी नहीं, उसका थोड़ा फ्रैक्शन भी दे देंगे तो भी परम गंतव्य प्राप्त होता है। मतलब वो भाव होना चाहिए, लेकिन हम कितने कंजूस होते हैं, हम अपने देना ही नहीं चाहते भगवान के लिए कुछ ज्यादा, हम अपने लिए करना चाहते हैं, हम अपना। अभी आप सोचो ना, जो हमारा जो जीवन दिन होता है पूरा दिन, उसमें कितना समय हम भगवान के लिए देते हैं, कितना समय अपने खुद के लिए सोचते रहते हैं। सोचो, आप खुद देखो अपने जीवन में। तो भगवान के जो भक्त होते हैं वो 24 घंटा नहीं, वो 24 घंटा से ज्यादा भगवान को देना चाहते हैं। जैसे परम जी गोपाल कृष्ण महाराज जैसे कोई भक्त हैं, वो 24 के 48 56 96 24 घंटे में उसका डबल ट्रिपल करके देते हैं भगवान को सेवा, इतना अथक प्रयास करते हैं। तो ये जो भक्ति का जो रहस्य है कि हम भगवान के लिए स्ट्रगल करें, भगवान के लिए संघर्ष करें, ये माधुरी हमें सिखा रहे हैं। और उसमें ऐसा कोई भक्त अगर इसको समझ गया ना, इसको पकड़ लिया, वो भगवान का धाम प्राप्त कर लेगा, इसी जन्म में कर लेगा, क्योंकि वो भगवान के लिए वो परिश्रम करने को रेडी हो गया है। तो हमें बहादुर से यही प्रार्थना करें कि हम भगवान के लिए हमारा पूरा शक्ति दें, बुद्धि दें, हम संघर्ष करें, क्योंकि संघर्ष तो है ही, संघर्ष को तो आप मना नहीं कर सकते जीवन में, बहुत जगह मतलब संघर्ष तो होगा ही। लेकिन हम संघर्ष किसके लिए कर रहे हैं? भगवान के लिए संघर्ष कर रहे हैं या अपने खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहे हैं? तो हमारे हृदय में हमें खुद ही झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं। क्या हम भगवान को खुश करने के लिए संघर्ष करना चाहते हैं जीवन में, या हमारे खुद के इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहते हैं? तो चॉइस हमारा है। तो आपको खुद चूज करना पड़ेगा, आप किस चीज के लिए, आप चूज योर बैटल, वेयर यू वांट टू फाइट। यू वांट टू फाइट फॉर सन ग्रेटिफिकेशन और यू वांट टू फाइट फॉर कृष्ण? सो इफ यू फाइटिंग फॉर कृष्णा, that is most glorious, and if you're fighting for some gratification, it is most inglorious. उसमें कुछ है ही नहीं बोलना, वो तो हर कोई करता है, कुत्ता बिल्ली जानवर सब 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 लोग संघर्ष करते हैं खुद के लिए। तो हमें खुद के लिए नहीं, भगवान के लिए संघर्ष करना है, इस प्रकार से। तो ये हम शिक्षा देख सकते हैं। तो अगर हम भगवान को इस तरह से चंदन देंगे, मतलब चंदन लगाएंगे, तो उनको ठंडक देंगे, भगवान को सेवा करके उनको सुखी करेंगे, तो हम सुखी होंगे। ये देखिए भाव है। तो भगवान को चंद्र लगा के भगवान को ठंडक देते हैं, तो हम उससे हमारा जीवन ठंडा होता है, उससे हमारे को वास्तविक हमारे हृदय संतुष्ट होता है ना। लेकिन अगर हम अपने ही को ठंडक देने का प्रयास करेंगे, भगवान को भूल जाएंगे, तो कभी हमारे जीवन में संतुष्टि नहीं आएगी। तो भगवान को आनंद देख करके ही जीवात्मा आनंदित होता है, ये इसका भाव है, इसका रहस्य है भक्ति का ना। सो तत् सुखी सुखित्वम, भगवान को सुखी करके ही आप सुख प्राप्त कर सकते हो, वरना सुख नहीं प्राप्त कर सकते। ठीक है, यहीं पे विराम देंगे, समय हो गया है। लेकिन किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। Amy Andrew, can you just open your can you come online? Amy Andrew. So there's going to be next session. That's why we have a new participant joining. Amy, can you put yourself on? Can you put your video on? Are you there? Can you hear me? Yeah. You have to put your video on. Yeah, I've been really sick. I need to skip
for Okay. now. So Yeah. they are my students from India. You can see them. They're all from India, and they are very eager for practicing Krishna consciousness. You can see all of them. You are able to see them. I gotta lie down right now. I just wanted to let you know I can't come today because I'm You can see them. Can you see all these wonderful devotees from India? yeah. Yeah, yeah, yeah. Okay. Okay. So we will start the class. Let others also join. Some other participants also yet to join. So once they join, then we will start the class. So हम लोग ये गीता नटशल ले रहे हैं. So there are some Western people also in this. So almost 3-4 of them join. No? So there is one boy from Amherst. No? वो meditation club का कुछ तो in charge है. He joins and some 2-3 more join like that. So most of them are Westerners. They join this 11 to 12 class. So they are finding interest in Bhagavad Gita. Amazing. Mhm. Okay. So any reflection? आपको कोई reflection है? कोई बोलना चाहेंगे? I think you didn't understand what I said. I'm really sick and I can't participate. No problem. I'm not telling you. I'm Oh, talking about others. okay. I'm sorry. All right. I will see you later. Yeah. Thank you. So any reflection? Anyone of you? पार्थ प्रभु, रोहित प्रभु, कोई reflection देना चाहेंगे? Yes, bro. So, like the one point which struck my mind was like the service attitude of Rajendra Prabhu. So, because of his service attitude, like God also was eager to take the service from him. हिंदी में बोलिए ना. Yes, bro. मतलब उनके सेवा भाव से कृष्ण अगर इतने प्रसन्न हो गए थे कि कृष्ण स्वयं उनके सपने में आके उनसे सेवा करवाते थे. So that is the highest thing. Like whole thing is like we have to like मतलब अंतिम में आपने जो बताया था कि दो ही चीजें मतलब संघर्ष तो इस भौतिक जीवन में होगा ही होगा. तो हम संघर्ष भगवान के लिए कर रहे हैं या खुद के सेल्फ ग्रेटिफिकेशन के लिए कर रहे हैं. बैटल फील्ड अपने तो अगर भगवान के लिए करने में अगर संघर्ष करेंगे फ्रैक्शन ऑफ मतलब अपने समय भी मतलब संघर्ष में अगर जाएंगे तो परम आनंद की प्राप्ति. हम्म. और कोई बोलना चाहेंगे कुछ? आलोक प्रभु या somebody else? Yes. Okay. ठीक है. तो we'll stop here. बाकी लोगों को नहीं बोलना है तो फिर नहीं बोलते. ठीक है, then we'll stop and we'll continue with our next session. That is Gita in nutshell, the the session of God. We are going to continue. Others can leave. Those who are joining now, they can stay back, and others can leave. Hare Krishna. We'll start the session in some time, in 2 minutes.
We'll start the session in 2 minutes. Just waiting for others. You're able to hear me? Yeah, I can hear. Okay, we'll just start in 2 minutes. What is it? A midsummer's night's dream. Some kind of horrible creature behind it. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu. Now I can't hear you.
Hare Krishna. Gunal, can you also put your video on? Can you put your video on, Gunal? Hare Krishna. Is it possible to put your video on? Ooh, I have my video. Yeah, the Gunal, the another one who joined. Could you please put your video on, please? Hare Krishna. What happened then? Hare Krishna. Can you put your video on, please? Ooh, my No, video's no, on. not you. Your It's video is on. on. No, no, your video My is on. video's on. Yeah. Another one, the Gunal. The Gunal. Can you put your video on, Gunal? No, a lot of time is going. They're not joining. If you won't mind, Nancy, could I know how old are you now? If you don't mind. Sorry? I mean, it's a personal question. Can I ask you? Yeah, of course. I mean, I just wanted to know how old are you? How old I am. I'm 65. How old are you? Oh, I'm 35. Hey, come on. Oh, hold on. बेटा, you have grown in your personality. एकदम बढ़ गया जिम जाते हो? नहीं, मैं आजकल कोई जा ही नहीं रहा घर पे वहाँ जिम जाता तो थोड़ा फिट हो जाता अभी तो आउट ऑफ प्रमोशन हो गया Can you call the Swapnil? Srivastava. श्रीनिवासन Srivastava. I don't know my message name but I can just look for it Yeah, just see whether it's Srivastava. Srivastava. Okay, anyways, we'll begin our session today. So today's session is okay, but I don't know, Gunal, who are you? I mean, you have to put your video on, then only I can know you. Okay, so this session is mainly talking about the existence of God. So here we are going to discuss very logically and scientifically that how there must be a creator behind this mysterious universe. This is why I discovered the ultimate genius, mastermind behind the mysterious universe. That's what we're going to discuss today. And this session is very helpful because once you have a very logical and reasonable understanding about the creator, then many people who kind of you get a very direct combat that people will. There are many atheists who will directly tell, oh, how can you say there is God and all? So you have very logical, sound arguments, can tell them. And it will also help you to increase your own conviction, understanding about the existence of the Supreme Creator. So that's how it is very, very helpful, this session. So, is it coming? yeah he's coming What is saying? he's saying he has to I mean he's joining Okay. You can sit. So I'll just open the PPT also.
But you were in India, so I was in India, but I came back. Can you see the slide? Yeah. discover yourself in the first session, right? When is the class? What time is it taken over? This one? Or this year? Every time this slide shows. Filter, we have to go where? Sorry. Where you have to go? Oh, I have to go meet a person. I'm also person. Yeah. Now can you see the slide? I could see it before. Okay. So by observing the world around us, scientifically we can see the hand of the supreme intelligent designer. So we'll have this subtopics. Scientific your observation, scientist observation, $2 million questions, activity time, and our prime duty. So by observing the systematic and harmonious universe around us, we can get many questions. Like, does God really exist? This question can come in the mind of many. Actually, you see, many people in this world, they have hardly sometimes, any kind of query about the higher truths of life. So that is only animal life, because animals don't inquire about higher truths. So they may be humans, but they are living like animals because they are not inquiring about those questions which can be asked by only human beings. So we don't find any animal asking about the purpose of life, whether really any God or not. Nobody asks. So only human can inquire these questions. So they are very rare rare souls, even in human form of life also. Those who actually take seriously these inquiries about life. Who is God? What is the purpose of my life? Why I'm suffering and all that. So, but surely in human mind, this kind of questions keep coming. Like when they see when any ordinary person will see sun, moon, different planets, stars in the sky. When you go in the night, when you observe, then in any human mind, this kind of questions will come. Who created all this, right? But it's only the rare human beings will actually start inquiring more seriously about these questions, and they seriously, sincerely want to know the answer of these questions. And and among them, the very very rare souls who will actually able to get the clarity about there must be some God, there must be some creator, and very few people will be able to actually understand who is that God, and they can actually awaken the relationship with God, and 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 find their and revive the relationship of love with Him. So this is how there is a it's like a pyramid. Like so many people, they are interested only in some kind of pursuits for some gratification, for their own selfish gratifications. They may be just living this life like animals. Majority of the human beings, some few may actually start inquiring about the status of life, and some among them, some few will be interested to actually seriously know the answer of these questions. And then very very rare souls will actually be able to understand that yes, there is God, and among them also very few will actually be able to awaken, revive the relationship with God, and attain the perfection of life. So now here we'll go in a very scientific manner to understand, yes, there must be some God. There is some God behind, this wonderful creation. Sapniru, can you call others? Actually, Nancy joined and she left because there were other meeting going on. So I don't know whether she got confused or what. Oh, Nancy is here, but Amy, I'm sorry, you meant Amy. Amy. Right, right. And also Actually, another boy that Connell. Ronak, Connell. Okay, okay. I wonder if Gonal, who we see on the meeting right now, is he Connell or? I don't know. He's not responding. I mean, he or she is not Oh, responding.
Okay, okay. Yeah, Annie reached out saying she is not feeling well, so unable Okay. to join today. And yeah, I'll follow up with Connell. Okay. You can tell her that she can only hear because she joined and she told that she is not able to respond. But you can ask her if she can only hear. That is also good enough. Okay, She need sure. not she Yeah. not she need not put video on. She can just hear. She might be feeling that video has to be on, so that will be Okay, the case. okay. You can just Right, check with her. right. Yes. She just puts the video on, video off and can just hear. That is also good. Oh, okay. Oh, by the way, we have Connell on the meeting. Connell's alternate name is Gunal. He just Oh, let me know. Okay. okay, Uh, okay, okay. nice to have you, Connell. Oh, that's good. Okay, okay. Yeah. Prabhu, I'll go now. I'll meet you a call. You're shifting now to device. You're shifting. Here, I was planning, but on the last semester was very hard. So Okay, no issues, no issues. So, who creates and maintains this beautiful and harmonious universe? Wait a minute. thank you. Thank you. Did you get this from India? This India Component. No? Component. No, one is fine. One is fine. I did it. It's more than enough. One is fine, right? One is fine, brother. Thank you so much. So, yes, bro. Okay, Yes, bro. Yeah. We'll talk. So it says that if any art implies there must be an artist, any organization implies organizer, creation implies creator, design implies designer, energy implies energetic, flawless laws implies lawmaker. So you can find that in this universe also, the wonderful artistry, organization, creation, so much of creation, so many creation, design, energy, and flawless laws. We'll see that. We'll see one by one. The screen, the PPT going ahead, you'll see. So you see all these wonderful paintings. So when you look at those paintings, naturally you may, feel like appreciating the person who has painted those paintings, right? That's a natural thing. So when you find some beautiful artistry, then you may want to know the artist behind. So all these beautiful paintings, the art definitely has some art. Definitely there is some artist behind who has painted this, who has made this. Same way in this nature also you find beautiful art, lot of artistry. Like I'm pretty sure in US also there are many beautiful places where if you go, you can find such beautiful artistry. Like in India, I have been to a place called Mahabaleshwar. So when I go there, so there when see the valleys, there's a specific point you have to climb there and you have to see downhill the valley and so many wonderful places. So it looks like as if somebody has nicely painted the whole thing. It's so beautiful. It's so beautiful. So ordinary painting, when somebody brings in front of you, then you know that there must be some painter. So in this nature also, there's so much of beauty. There's so much of artistry. Like sunset point, sunrise point. People have so much of uh, excitement to go and watch, see that the nature's beauty. So who has actually painted? Who has made this beautiful art in the nature? Who is artist behind? That one can ask. And also you find that to even make a artificial flower, you need another paper and scissor and Fevicol, and also you need to have your skill to assemble them in a way that it looks very beautiful flower, it becomes a beautiful flower. So even to do that, you need somebody who does all that. But what to speak of the natural flowers which are coming in the nature, the roses, the lilies, the sunflowers, so many beautiful flowers. So who has assembled them? Who has made them? Who is the artist behind those flowers? We say by chance because we don't see the person behind. Just because we don't see the person, it doesn't mean that it has come by chance.
Like if somebody gives you, artificial flower, then you know that somebody has made it. Either the person who's giving you has made it, or it might be in the shop, and then the shop somebody has made it. It is not just lying there like that. So there must be somebody who has made it. So same way in the nature also, you find so many wonderful flowers coming. So who made this real rose? Who is the person behind? And this kind of flowers are not some ordinary also. They are very, very special in terms of their delicateness. They have fragrance. They have much more biological complexity, unlike some artificial flower. So who has given such beautiful shapes and forms to these wonderful flowers and fragrance and everything? And who has made them? So there must be someone behind, right? So that's what art implies. Artist. There's some beautiful. So all this artistry means there must be some artist behind. So now you can watch this. Wait a minute. Let's put the sound. Now you can watch this. Organization implies organizer. Bees are called social insects because they live and work together as a community. Thousands of female bees, called worker bees, live together in a hive with a queen bee. The queen bee was marked with a red dot, so we can see her better. The worker bees are all females, but they almost never lay eggs. Worker bees do almost all the chores in the hive. They gather pollen or nectar, guard the entrance, clean the hive, build the comb, make honey, tend the queen, and feed the larvae. They even fan the hive with their wings to keep it cool on a hot summer day. So you can see how there's beautiful organization and they have such skills the honeybees have. So who has given such organization skills to the honeybee? Mathematician spiders. Compared to their own sizes, spiders build very large webs. Indeed, if we enlarged a spider to the size of a human being, the length of the web it weaves would be approximately 150 meters, which corresponds to a 50-story skyscraper. Is it possible for a human being to weave a lacework the size of a 50-story skyscraper in only an hour? But a tiny spider accomplishes much more than that. Moreover, the spider-woven web is the sturdiest material in the world. How do spiders weave these webs possessing miraculous features? The spider takes into consideration many factors while weaving a web hundreds of times larger than its own size. This task demands at least some calculations essential in constructing a building. For the accomplishment of this work, first the spider must draw a project like an architect, for a construction of this size, design, and sturdiness cannot be accomplished without an architectural project. Once the project is drawn, the spider must calculate the lifting capacity of each part of the web like an engineer, otherwise the web cannot remain suspended. In order to design such a web and make such delicate calculations, the spider must be more qualified than a college graduate. Indeed, there is not a university that provides education to the offspring. Following their birth, they begin to produce silk, weave web. Yeah. So you can see how the spider also have such amazing skills. Even a engineer, when he has to make this kind of structure, you can see how much he has to learn and get education and get a degree, and then he's able to do it. He can acquire certain knowledge and skill to be able to
makes us kind of think that the way he's telling that, no, as if like everything is calculated like an engineer, and how the engineer calculates everything. So it's amazing the way the spider has this kind of, you know, a skill and talent, and and who is awarding that skill to the spider? That spider has never gone to any school or any college, but has got all that. So there must be someone who is given. So you can see beautiful organization means there must be some organizer. Like if you find in any school or any company, there are certain systems, certain like in a school, the school starts at a particular time. Then there are periods, and the periods durations are fixed, and there is a lunch time, the games period. So all varieties of organization is done, and then there are exams, the examination room, there is principal office, the playground. So and everything is being organized. There's a principal sitting there, and through the help of teachers, he organizes everything. So there must be some there must be some organizer, the principal. Then only this organization is happening. Same way for any company also, there is HR department, the sales department, there is production department, support department, and then there are hierarchy, managing director, there are managers, there are team leads, there are executive of engineers. There are so many varieties of departments and resources, and everything is well organized. Why? Because there is some CEO, the owner of the company who is making everything organized. So any beautiful organization means they must be organized. So in this nature also you find wonderful organization. You see the sun rising in time, the planets and stars, they all have their fixed positions, and you can even predict the positions of stars and planets, if you know the science. So because everything is well organized, well manner, everything working. You don't find that any particular day the sun is not coming only. It's the sun has not risen today, or the sun is late or something. It doesn't happen that way. So everything is well organized in this universe. So who is the organizer behind? Now, certain thing one may find, no, there are a lot of chaos also. There are earthquake coming, tsunami coming. You may say, no, there's some kind of unorganized things also. No, that is also part of organization. Like you find in a home there are different rooms. So drawing room is very wonderfully maintained. Kitchen is good, and then bedroom is neat and clean. But there is something called a storeroom where everything is so topsy turvy kept. It is just piled up, things like that. So the storeroom is not so much, made such kind of organized way. Things may not be so neat and all that. The storeroom, things are just kept. So that is also part of the organized, home of that owner. So like that. So the point is that in this universe also, you may find certain discrepancy. You may think, but that is also within the organization of the universal creator. He is making it in his way, everything perfect. So like somebody may say no, but there are sufferings also. There are untimely deaths also. Some diseases come, so things are not organized well. There's some poor people, they starve or something like that. Things are not organized well. No, but there are, you find in the government, there are some there is prison house also. In the prison house, you find people are suffering. Sometimes they're not given food. Sometimes they have to suffer. That is also in the plan of the government. The government has organized this prison house also to inflict suffering to certain kind of people, those who disobey the government. Same way, in this world also, you find those people. There are certain suffering, there are certain kind of discrepancy you may find, but that is also under the plan of the government, because they have their own karma. That's called technically. We will see this in later session, next session. That's called for the previous actions. People get the reaction sometimes. Yeah. So this is also under the plan of the supreme. So we will talk about it later. Next session that will come. Law of karma. So anyway, the point is the beautiful action guys. There must be an organizer. So likewise, we see wonderful things created by man. Like you find this sleek car, somebody has manufactured it. You're able to see some nice cars there. Somebody has manufactured it. Same with this computer, somebody has assembled it. Watch, somebody has designed it. Oh, it's architecture marvel. So someone erected it.
So it's all things somebody is there behind. Skyscraper building, somebody built it. Wonderful sculpture, somebody carved it. So should not this universe have super intelligent creator too? Right? So creation implies creator. So you can see uh, the Sakaya seed, Sakaya tree. I don't know whether have you heard about Sakaya tree? Sakaya tree is very huge, and its seed is only pinhead size. In the pinhead size seed, the entire Sakaya tree is there. You can see. So you can see it's the size, the height of the Sakaya tree. When you see the Statue of Liberty and the Sakaya tree's height, but the size of the seed of the Sakaya tree is just pinhead. It's very very small. So the whole designing of the entire tree is there in that seed. Just see. So we are coming to the next one. That's a design implies designer. So in this nature, you find the seeds are there, and which has the entire programming of the tree. And also this is like one thing we said about psychiatry, but there are different trees also, like mango trees, orange trees, no? Different varieties of trees. So in the seed itself, the entire programming is there, entire design is there. Like when you sow the mango seed, the mango tree comes, and then from the same soil and water and sunlight, the sweetness is extracted from it, by that treatment. I mean, the programming is then how accordingly the whole. I mean, accordingly the sweetness is being extracted, and then the fruit which is coming out from that mango tree is so sweet. And then another say orange tree, then there's another kind of taste which is coming out. So it's all there in the seed. The whole designing, the whole programming is done in the seed itself. The seed. So just like if you want to design a chip, which can store which can store movies or something like that. So you need so much of hard labor to study, till 10th grade, 12th grade, then college, and then you may have to do some, maybe research and everything, and then you can actually design a chip which can store some information, some books or something, movies and all. But who has designed this seed which has such a programming where so wonderful trees are coming with just fruits and flowers and everything, and the kind of leaves and the kind of fruit and the taste, everything is defined, everything is designed in that seed itself, you see. So there must be some brain, who has done that. Otherwise, how it can be randomly? Like once I was in my childhood, I saw the CD player. That time CD player would come. So there would be some CD disc. You have to put in the CD player, and the movie would come. Then I was very small. Then I cut the piece of paper of the size of the CD drive, and I put it there in the CD player, and I was expecting some movie should come. But I was so foolish. No, I was not understanding that I have not designed anything. It's just simply a piece of paper that won't work. But the CD drive, the disk, is actually designed by engineer, and which can store the movie, and that's how it can show up, in the CD player. So how can the natural seeds, which is there in this nature, can be a random thing? There must be somebody who has designed, who has done the programming in those seeds. Yeah, the human brain, and even the human brain also. Who had designed the human brain? The human brain can store more information than all the libraries in the world. You see, fact about the human brain. Yes. So you can see how the human brain
So some amazing facts about it. So let's go down to the macro world. You see macro and macro world both. Amazing structure, amazing design, amazing, harmoniously everything is working. So if you see the DNA molecule of life, adenine, guanine, thymine, you see, if little bit of combination changes, the whole genetic gene gets changed actually. And accordingly, the properties of the living body also gets changed. You know that. No? So at macro level also, such perfect design is there. Perfect structure is there. And same way you find the lattice structures. If you have studied science, so different lattice structures you can see, they are so, harmoniously structured and, assembled by which different materials are there. So every material has its lattice structure and which is so having a wonderful particular, unit lattice. So rhombohedral or whatever it is. So, and you know that the graphite, if there is slight molecular change, then it can become diamond. So it's little molecular change at micro level. So the whole property of the substance gets changed. You see, that means at micro level also, things are so precise and so perfectly structured and arranged. So meticulous design in the micro world. Same way at macro world also you find that like satellite, if some satellite has to be launched, then we know that how 24 hours of monitoring is done. And then we know that how there are so many scientists down the clock, they work very hard governing all the different parameters, like spin's velocity, heat dissipation, orientation, orbit decay correction, is all that. And then finally they may able to launch the satellite. When they were trying to launch one Skylab, but some parameters got disturbed and the Skylab was it got deviated, and they had very tough time to somehow bring it, somewhat in control, and they somehow diverted it to the ocean, so that it did not give any kind of harm to any, place where people are living and some kind of harm to the lives of people. Somehow they did it, but it was a big tension. So just to manage to launch satellite, it requires so much of, monitoring and, efforts of so many people, so many brainy people. So what to speak of the natural satellites and planets which are revolving around Earth, and they are much more having complexities. And even little bit of here and there things happen, the life may not be possible on Earth. But when who is managing, who is controlling them? So who is in control? So is it NASA? No, NASA is not. So it's like a traffic policeman who controls the signal of traffic. Same way the traffic of revolving planets, who is controlling? We don't see that we and you or me or any country or anybody is doing it. So who is doing it? There must be someone, right? So there must be some God who is doing that. So marvelous designs in the nature also you find. So many wonderful designs in the nature. You find that. So there's a nice video. You can see this. Very interesting. Around 1200 AD, a man named Leonard Pisano, better known as Fibonacci, discovered a sequence of numbers that created a very interesting pattern. The sequence begins with the numbers 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and continues indefinitely. Each number is obtained by adding the last two digits together. A rectangle with a length and width of any two of the numbers of this sequence forms what is known as the golden rectangle, a perfect rectangle. A golden rectangle can be broken down into squares the size of the next Fibonacci numbers down and below. If we were to take a perfect or golden rectangle, break it down into smaller squares based on Fibonacci's sequence, and divide each with an arc, the patterns begin to take shape. We begin to see Fibonacci's spiral. The spiral in and of itself is insignificant. Its importance is revealed in where we find it. Take, for example, the sunflower. The display of its florets are in perfect spirals of 55, 34, and 21, the sequence of Fibonacci. The fruitlets of the pineapple create the same spiral based on the sequence. The pine cone does the same.
As currents move through the ocean and the tide rolls onto the shore, the waves that bring in the tide curve into a spiral that can be mathematically diagrammed onto a plot at the points 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, and 55. Buds on trees, sand dollars, starfish, petals on flowers, and especially the nautilus shell are formed with this exact same blueprint. With each segment of growth, the nautilus adds to itself one more value on Fibonacci's scale. This blueprint can be seen around us on a small scale every day, but the greatest example of all is directly above our heads. At an average of 100,000 light years across, even the spiral of the galaxies above us are formed with the exact design that the tiny shell is formed. This sequence or blueprint appears to be the trademark of a designer, a proof of a creator, something left behind indicating the one who was there, a fingerprint. As we scan our universe from the tiny flower to the awe-inspiring galaxy, we see the fingerprint of God. As you know, amazing. Design by designer. Same way, energy implies energetic. If you find that some kind of stone comes out of the window and hits our screen on the TV, then we will be so upset, not with the stone, but with the person. Because stone was actually carrying the energy. We don't have problem with the stone. We have problem with the person who gave the energy. So any energy means there must be some energetic person. Energy cannot exist independently. There must be some person who gives the energy. Same you find tremendous energy on the sun planet. You can see that amazing facts about the sun. So it says energy emitted by sun per second is the amount of energy consumed by human race throughout the entire history. So much of energy is there. Somebody will say, from where the energy is coming, the sun? Oh, the nuclear reaction, helium and hydrogen, nucleus and bombarding and energy is coming. But who gave that energy to nucleus of, who put those helium and hydrogen atoms at first place? And who stored the energy in? That has to be asked. So in 1 second, our sun produces enough energy to meet the current needs of the entire earth for 500,000 years. Behind energy, there is always an energetic person. So who gave so much of energy to the sun? Same way, you look around the world. Who made the law in the school, colleges at this time? In the India, we keep left. In the US, we keep right. So who made this law? Traffic police laws. Our cricket in ICC, Indian cricket team, or International Cricket Council. Who made this? So the International Cricket Council that has made the law. So somebody's made the law. When law doesn't come on its own, law implies there must be some lawmaker. So it's a periodic law, not by periodic chance. Same way, you find there's so many laws in this nature also. Like laws of physics are there. Like you find this parabolic path when you hit a ball or something. The laws of gravitation you see the Newton sitting. So there's laws of gravitation, there's laws of refraction, there's laws of optics, laws of thermodynamics. There's so many laws governing in this world. So every event actually is governed by certain law. Nothing happens randomly, right? So any event, there are certain laws. It is under certain laws. That's how we can predict certain things. The way, like if you throw a stone, how much height it can go, depending upon the law of the force of gravitation and how much we have given the velocity, everything. We can find out certain things because everything is following certain laws in this nature. Nothing happens randomly. So in micro and macro world, the precise laws of mathematical accuracy govern this world. Nothing is happening independently. So then the many things in this world you find that there's some beautiful, ugly, handsome, not handsome people, stinking rich, artistic, and MD doctor, laborer. Then who decides all these things? There are different events of life.
Who decides? So we choose education, job, husband and wife, car, apartment, but we don't choose what we don't choose. Can you tell what we don't choose in our lives? Can you name some things which we don't choose in our life? Yes? What things we don't choose in our life? It is just given to us. Yes, please. What things you feel we don't choose? Please tell me the Most, answer. just Huh? about everything. Sorry? I say we don't choose most things. Like? The weather. Correct. What else? I don't know. Yeah, correct. Whether is one good answer. Our parents, we did not choose our parents. We did not choose our face shapes, face cuts. We don't choose our intelligence also. So, and who chooses and what basis? Is it by chance then? No, it's not by chance. See, we say by chance because we don't understand. We may just say chance. Like a boy may go to his house and may find on the dinner table nice sandwich lying. And he says it's by chance sandwich is lying. This poor fellow, foolish, he doesn't understand that mother has kept it. The mother had to go for some party, she had gone out. But she has made some sandwich and kept on the dinner table. But this foolish child thinks that on its own, by chance, the sandwich is lying on the dinner table. No, it is not by chance, it is by arrangement. So same way, so many laws governing in this world. So there must be some lawmaker. And so that everything is happening under certain laws, and there's a lawmaker. So and it's everything is happening under his supervision, like that. Karmana Devanetrena. That's what Bhagavatam also says. Our scriptures talk about it. So how can our birth, beauty, intelligence, these all can be random events? Because nothing happens randomly in this world. Everything is governed by certain laws. So how can this be coming by random? How can this be happening randomly? So there must be certain laws. So that law actually is called law of karma, laws of nature, law of karma. About it, which we will discuss more in the next class. Karmanadeva netrana jantur dehavapatye shriya pravishta udaram pumso reta kanashreha. Under the supervision of Supreme Lord and according to results of one's work, the soul is awarded a new body. So according to the law of karma, we get new birth, different bodies, different kind of intelligence, different kind of face cut. You know, somebody may get handicapped body, somebody may get healthy body, all that. So there are flawless laws, there must be some lawmaker also. So we'll move further. Scientist observation. We find there's so many scientists, like Albert Einstein said, Lord God is subtle, but malicious he is not. Albert Einstein says. Same way is find that no, Erwin Schrödinger also he believes in God. Then Lord Kelvin says, if you think strongly enough, you will be forced by science to believe in God. Okay. The Newton story. Newton's friend once told there no God. They were atheist. Newton said, wait a minute, come tomorrow. Tomorrow, the next day they come. And they see this nice solar model. And they started appreciating Newton. Newton, you made such a nice model. Newton said, no, it has come by chance. It has come up from nowhere. I said, what? How can it come by chance? How can it come from nowhere? You must have made it. Newton said, no, it has come by chance. And then they were laughing. Yeah, we are the fools or what? How can we believe that it has come by chance? Newton said, you're not able to believe that it has come by chance, but you believe that the actual solar system has come by chance. How is it so? When you say that this cannot come by chance, somebody must have made it. Then why not the actual solar system also being made by someone? How can that be coming by chance? Because that is much more complex. That is much more complex. I mean, the intricacies and parameters and everything. Because it's actually here the solar. I mean, the model is being monitored by certain motor and things and like that, which you can do it in a small scale. But that is like such a big scale, and also it is floating, and how you monitor such kind of spin and angular velocity, angular momentum, and everything. And then and life is possible on Earth. Little bit of discrepancy here and there, life may not be possible on Earth. So this is how Newton defeated his atheistic friends. Wait, you're going too fast. Going too fast? Oh, I did not. I'm Yeah, not reading it. I'm not reading it because
Yeah, it will take some time. But if you Yeah, want, you because can you read showed one a couple of slides ago, and then I didn't have a chance to read it. it. Yeah. I did not show you. Actually, I did not read it. I just give you the gist of how the scientists are believing God. But you can read it, no problem. Can read it. Okay. Could you go back a couple slides to the other long one? Wait. Okay, the second one there. Hold on. I'll take a picture. Okay, the next one. No. Yeah, wait. Yes, right there. All right, go ahead. Yeah. You can take Thank picture you. of this also. Take picture of this also. Okay. Got it. Okay. Okay. I saw in it that key to the deepest secret of nature, and it revealed to me the greatness of the creation and creator, Max Born says. And a question for me has no meaning unless it represents the thought of God, Srinivasa Ramanathan says. It is a higher power not influenced by our wishes, which finally defines and resists. Hassenberg says. We ought to value the privilege of knowing God's truth far beyond anything we can have in this world. Michael Faraday. So you can see all these scientists are believers of God. What is the origin of the universe? Can you answer? Gunnar also can answer in the chat. It's just an actual question. Yeah. What is the origin of the universe? Please tell. If you answer, you become crorepati. Seems like a subjective. Gunnar says A. Big Bang says. What is the origin of the universe? Big Bang, intelligent design, or chance? Yeah, but nobody really totally knows. Yeah, but still, what do you feel by my presentation you heard till now? So what do you, on the basis of my presentation, what do you feel? It has come from Big Bang, chance, or some intelligent design. What? Well, you might say intelligent design, but then some people might disagree with you on that. Yeah, but we can logically understand there must be some intelligent design. Let's see whether it's correct or not. Yes, that's the correct answer. Intelligent design. What is the purpose? Google can also put in the chat. What is the purpose? Well, again, you might say D, but some people might disagree with that. What about Kunal? What does he say? Yeah. What does Kunal say? D. Okay, good. Understand God and that. Now I have an argument for saying God has come from Big Bang. I mean, the universe has come from Big Bang. See, have you seen a complicated machine which came by chance and has no purpose? Have you ever found like that? It has come by chance and no purpose. You find a machine. No. Any machine is there. It has come by not chance. Somebody has made it. And it has a purpose also. Same with this cosmic machine, cosmic manifestation. It also must have been created by someone. And it has a purpose also. It must be having some purpose. Now somebody must say Big Bang. From there it has come. So now to have Big Bang, what does they say? They say that there's a point which has infinite density, infinite pressure and temperature, and from a point which is cannot be mathematically described, physically it cannot be realized. And then from there, the bang happened, the universe came. So it's a very hypothetical case, actually. Nobody has seen that point. And even if some bang happened, there must be somebody who did that bang. The bang cannot happen on its own. Bang, then there must be some kind of destruction. We don't find from any bang some nice constructive thing coming out. You never find
big bang construction company. It bangs and nice bridge come out, nice palaces come out, nice hotels are coming out. You don't find. When you hear in the newspaper, you hear from the newspaper or the news that some blast happened in some place, then you always expect that so many people died, so much of loss happened. You never find some constructive things happen. Oh, so there was a bomb blast and 10 nice palaces got built. Mhm. Or mm, so many beautiful gardens got created. Nothing happens like that. So bang theory, Big Bang theory is actually quite ridiculous. Actually. It doesn't have any basis. So even if there is a bang, we say, then there must be somebody who has done that bang. So who did that bang? Like when bomb blast happened, then we always are eager to know who did that bomb blast. Because we very much know that it cannot come on its own. There must be someone who has planned it. Does it make sense, Gunnar, to you? You can put on chat. So any machine, computer, building, even a pen and pencil as a maker or designer. Logically, the far more complex and awesome universe must have a superintendent, designer, and producer. So Big Bang Theory, as it says, you can see here, it says that temperature, infinite density, infinite size, physically indescribable, mathematically infinite, beyond all conception of space and time. You should infer that no theory of the origin of solar system has yet won general acceptance. All involve highly improbable assumptions. Yeah. So there must be some big brain, not the Big Bang. Actually, I am running short of time. I'm already over time. Can I take 5 more minutes if you're okay? Gunal and Nancy, both of you can put in the chat if you're okay for my 5 more minutes. Are you okay? 5 more minutes? Yeah, go ahead. Gunal, are you okay for 5 more minutes? Yeah, sure. What about you, Gunal? Okay, fine. So now you have to make a comparison between the government of your country and the universal government. So Home Ministry, national government, universal government, like law and order and punishment. So now you understood now there is a national government, universal government is in the universal cosmic manifestation. So Home Ministry, like it gives law and order, punishment part takes care. Same way, if somebody goes for illicit sex, one can get AIDS. Somebody goes for smoking, may get cancer. Somebody goes so much of drinking, gets liver problem. So you see, now there is a Home Ministry in the universal government also. Same way, can you guess what is the health ministry in universal government? How does the health ministry function in universal government? Can you tell? Like there are Ayurvedic herbs in the universal government, correct? What about Ministry of Energy, Electricity and Lightning in universal government? You able to understand what I'm doing here? No. It's a national government, how things are taken care, and the universal government, the universal cosmic manifestation, how those things are taken care that we are trying to see. So Ministry of Energy, Electricity and Lightning. So how does the universal government this thing is taken care? Any guess? Your answer. Sun and moon, right? Sun and moon that takes out the energy, the universal government. Finance ministry, currency of wealth. How does it take? How it is taking a universal government? Yes. Gold, silver, and naratnas, diamonds, etc. Correct. Then there is national government. There is defense ministry, protection from dangers. So how in the universal government is taken care? Any guess, Nancy? You want to say? No, no. Huh? Are you on the same page or you're lost? I'm not quite sure I understand your comparison, to be honest. Okay. Yeah, sorry, you look a bit confused. I'm talking about a national government, like say America. In your country, there is Home Ministry, Health Ministry, Ministry of Energy, Finance Ministry.
defense ministry, education ministry, isn't it? Is there or not? All these things are there. Same way, in a universal government, I mean to say, is the whole world, not just planet, the entire universe. These things in the material nature, this thing is taken care or not? Like home ministry is taken care, health ministry is taken care, ministry of energy. We have not made those departments, but it is taken care in the nature, the universal government. So, like health ministry, Ayurvedic herbs are there in the nature. It takes care of the curing of the humankind or any species of life. It cures the disease. Same Ministry of Energy, sun and moon, it takes care of the energy supply. Like that. So defense ministry, can you guess what is the universal government? Now do you understand it? I think I have to think about it for a while. Think. Okay. So yeah, defense ministry is protection of from danger. So you can see there ozonosphere, immunity in the body. It takes care of the protection. Same with the education ministry, education for citizens. So they have Vedas, Bible, Quran, which is given in the nature. So now from this activity, what do you learn? Behind every government, there is a prime minister. So behind the universal government, there must be God. The prime minister maintains and controls the country. The God maintains and controls the whole universe. If you break the governmental laws, then you get punishment. Same way, when you break the God's law, then you suffer. But if you abide by the God's law, then you prosperous. Then you grow. Then you become more prosperous. So unseen is proven by the seen. There is a shloka. You can repeat after me. Mataha parataramnanya. Can you say? Can you repeat this? Mataha parataramnanyat. Mattah parataram nanya Kinchidasti dhananjaya. kinchidasti dhananjaya Mai sarvam idam protam. mayi sarvam idam protam Sutre manigana iva. sutre manikana iva. Can you read this, Arjuna? That one? Can you read? Me? Or Yeah. Can you please? me? Yeah. Go ahead. The English or the Hindi? English. Okay. Oh, Arjuna, everything rests upon me as pearls are strung on a necklace. Yeah, it's from Bhagavad Gita, 7.7. So, our prime duty. So, use our intelligence to appreciate the great creation of God, to unfold mysteries of God's creation through science to glorify God, to understand and explain the purpose of Lord's creation, which is to love God and love all, and to utilize everything for pleasure of God and welfare of all. So, in summary, we saw this. Your observation: artistry implies artist, beautiful organization implies organizer, creation implies the emotion of creator, design implies the emotion of designer, energy implies the emotion of energetic person, flawless laws implies the emotion of lawmaker, and scientist observation we saw $2 million question, that is what is the origin of this universe and what is the purpose. We saw that. Who created this universe and what is the purpose? And then we had a comparison, national government versus universal government. And we discussed about our prime duty. This is done. This is done. Our session is done. So, do you have any question or reflection you can take? Fine. To put that mind map back for a second. Okay, I'll do that. It's very small, but No, the other one, the one before. yeah, I'm listening. Okay. You have taken the photo? Yeah, I got it. Thank you. Okay. So, do you have any questions? Gunal or Nancy? Acha, Gunal has left. Not at the moment. So, what was the point which was most striking? Sorry?
Which point is most striking for you? I don't know. I mean, it is interesting. I don't know if it's on that map, but the way everything is designed. If you look at a flower or you look at something, and it's very, it's just perfect, and you're like, wow, how did it get like that? If you really kind of start to look at those things rather than just like, just taking them for granted or going by them or whatever. If you just start looking at them, it is pretty incredible, I think. Yeah. So what does you conclude by that? I don't know. Yeah, I mean, I guess I believe in a creator or God or something like that. So yeah, so I think that's like, yeah, Very that's nice. pretty neat. That's pretty. Neat, NEAT. Uh, It's an American thing. okay. It's not used very much these days. Okay. It means good. Oh, Jesus. Very nice. Thank you for your reflection. It was very nice to hear. Oh, sure. So, thank you. So, You're welcome. may you get God's dream. I'm seeing some kind of a midsummer night's dream on your background. Oh, that's just a play my son was in years ago. That's a Your son? Midsummer Night's Dream. It's a play by Shakespeare. Oh, okay. Yeah, he's an actor. You have how many sons? One. Oh, you have one son, and Yeah. I mean only one child you have? Only one child. I know that's that's what Nepali people used to say to me. Oh, you only have one kid, really? No, that's fine. That's fine. Really? Oh, Not like that. Only one? No. What happened to you? No. That's all right. Oh, you poor So what your son does? No, Nepali people very much really. No, what a shame. what does no. Sorry? It's not like that. Even it is said if you have even have one son and if he's good, then it's everything. It's like one moon. One moon is good enough to dissipate the darkness. It's not about the quantity, it's not about the number. It's about how much you have invested your energy and time to take care of your dependent. Right. It's not about the number. In life's any aspect, it's not about the quantity. Quantity may be there, whatever, but the quality is what matters. Like how many years you live, that doesn't matter so much. But what is the quality of your life that matters a lot. There are some great personality, they have lived very less number of years, but they have lived a very quality life. So that matters a lot. You say a moment of very great absorption in divine is much superior than millions of years just living in bewilderness, in ignorance. Right. The moment of deep absorption in divine is much valuable than millions of years lived in bewilderment, in illusion. Right. What happened to what's her name? The other woman, Amy? Who's the other woman? Oh, sorry, she's not feeling well. Yeah, she was not feeling well. Even I'm also not feeling well. What's her name? I'm sorry. I forgot. My name? No, the other woman who usually comes. Amy. Okay, that's what I thought. Yeah. No, I thought I saw her at the beginning and then So where is your son? What does he do? Sorry? Where is your son and what does he do? What does she do? No, your son, what does he do? Where is he? I teach English online. Your son. I'm talking about my son. He has a cafe. He owns a cafe. Okay. I mean, does he stay with you or he's somewhere in different state? No. He's in the same town as I am. Okay. You meet him often? Yes. Oh, very nice. Very nice. Okay. So he still keeps in touch with you? Yeah, very much so. Very nice.
good. And he also is interested in God and in spiritual life. I'm not sure these days. Kind of. Okay. I don't know. He used to be a little bit more, but I don't know these days. I don't know. I'm not really sure. We haven't had as many spiritual discussions that we used to have, so I'm not sure. He's very busy, so I'm not sure things about this. How old he is? How old is your son? He's 30. Oh, he's just 30? Okay, okay. Yeah. Younger than me. Sorry? He's younger than me. He's younger than you. Oh. Yeah. All right. Well, you don't look that old. Anyway. And he's having his own kids also. Your son also has some kids. He also, I'm sorry? Your son also has his kids. I didn't get the last word. I apologize. No, your son also has his children, his kids. No, he's not married. He has a girlfriend, but he's not married. He doesn't have any children yet. Okay. Yeah, I don't know if he will. We'll see. Okay. We'll see. I don't know. Okay. I don't know. I don't know the expression in Hindi or in Arabic. You know, they have an expression, inshallah, or in English, if God wills. I don't know the expression in Hindi or Nepali, actually, to be honest. Yes, No, we say Krishna willing. Sorry? We say Krishna willing. Ah, Krishna willing. Right, exactly. Okay. Yeah. Okay. Anyway, Okay. so you're planning to come to Boston Temple, no? To visit and take darshan. At some point, yeah, I have to get in a few weeks, maybe. I don't know. If you send me Amy's phone number or whatever, I have to get in touch with her because she wants to get a ride. So Yeah. if you could send me her number, then I can get in touch with her. Yes. And whether if your son also wants to come, you can bring him also. I doubt he's very busy and his cafe's open a lot, so I doubt he has a time, but that's kind of you to offer. He's very busy. If I said that, I wasn't laughing to be, it was just like he'd be like, I don't think time to do that well. So, you know, children. Anyway, but thank you. That's a very nice offer. Where in Boston are you located? 72 Commonwealth Avenue. Okay. I'm not sure. We'll send you I the live address. in, It's pretty much Sorry? in downtown Boston. been pretty much okay. I lived in Cambridge years ago, but that was a long time ago. Right. We'll send you the address. Swapnil will coordinate with you. He will send you. Okay. All right. Yeah, send me Amy's number and we'll figure it out. I found Swapnil as one of the most kind-hearted person in this planet. One of the most kind-hearted person. Swapnil. Okay. Yeah, Well, he's a very amazing personality. Okay, cool. Yeah, I mean, it's Our worth teacher, even. Raghav Kripa Prabhu, sees good in everyone. Sorry? He sees good in everyone. So All yeah. right. That No, makes I'm sense not. also. I'm telling the truth. He's one of the Okay. most pleasing person, Swapnil. One of the most pleasing person I found in this planet. Very pleasing personality. You know, great. if you talk to him, you feel like all contradictions of your mind is resolved. If you talk to Swapnil. Excellent. Yeah. Okay. So you must come to see him and meet him at least. Okay, well, we could all use a little of that. Anyway. All right. Thank well, you. Yeah, no problem. Take care of Thank you yourself. so much. All right. Thank you. All right. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. Hare Krishna.